हेलो एवरीवन, जनता कैसे हो आप लोग? Hi आज की everyone. Hey, हाय Amar here as अमर। well. We are both in the little site, so just thought let's get a shout out. यस। सो टुडे बहुत इंटरेस्टिंग सी क्लास है। बहुत लोगों ने हमें इसके बारे में मांगा था, रिक्वायरमेंट की थी कि उनके पास रेज्यूमेज हैं, उनको नहीं पता कि उनका रेज्यूमे अच्छा है, बुरा है, कैसा है, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो हमने क्या सोचा, हमने कुछ 7 लोगों के रेज्यूमे उठाए एंड उनके ऑफ कोर्स उनके कंसेंट से, और इनके हम लोग करेंगे लाइव रिव्यूज। विल गो इनटू द डिटेल्स, सारे नुआंसेस, सब कुछ। और साथ में आप बगल में देख सकते हो हमारा जिगरी दोस्त, हमारा चैट जीपीटी साथ में खुला हुआ है। वो क्यों खुला हुआ है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। उसको कैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है फॉर रेज्यूमे रिव्यूज एंड फॉर फिक्सिंग रेज्यूमेस, वो भी हमें थोड़ी देर में फिगर आउट कर देंगे। और अगर आपको इसमें थोड़ा और डिटेल चाहिए होगा तो हमने एक वीडियो भी की थी काफी टाइम पहले जब चैट जीपीटी के बारे में स्पेसिफिकली रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम दोनों चीज कंबाइन करेंगे। मैंने एक तो पहले बेसिक समझाया था कि रेज्यूमे स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कंटेंट, ग्रामर वगैरह, और बेसिक ये we were going to do a live session, Talvinder, where then there was some technical issue. तो आप लोगों या ने जिन्होंने रेज्यूमेज भेजे हैं हमको वो लिंक पर हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसको ब्लैकआउट करके। मगर आप लोग वीडियो देखोगे तो आपको तो खुद की रेज्यूमे तो जरूर समझ आ जाएगी, और अपने रेज्यूमे जो ऐसे सिमिलर होते हैं आपने जो बाकी लोगों ने बनाया है वो भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर। जी, सबकी वही प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए हमने सारे इन्फॉर्मेशन हटा दी है, नाम वाम सब हटा दिया है, सो दैट यू कैन जस्ट फोकस ऑन द की आइडिया ऑफ द रेज्यूमे। ठीक है, हमारे पास 7 रेज्यूमे हैं, हम लोग कोई जल्दी में नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि ये कितना क्रिटिकल और कितना एंग्जाइटी वाली चीज होती है कि यार रेज्यूमे कैसा बना है, और अच्छा बना है कि नहीं बना है, शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो हमें पता है। मैं थोड़ा सा अपने आप को साइड वाइड कर दे रहा हूँ ताकि हमारे पास ना जगह बन जाए थोड़ी सी। ठीक है, ओके। सो इसी का हम लोग कोई जल्दी में नहीं, विल टेक अवर स्वीट टाइम इन फिगरिंग आउट एंड फिगरिंग आउट ऑल द निटी-ग्रिटीज ऑफ योर रेज्यूमे। जो एक ही चीज हम लोग शायद नहीं करेंगे वो है आपका रेज्यूमे हम लोग रिकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपका रेज्यूमे बना के नहीं देंगे, वो नहीं करने वाले हम लोग। दैट इज आउट ऑफ द स्कोप फॉर दिस क्लास। व्हाट वी आर गोइंग टू टेल यू इज व्हाट यू कैन हैव डन, यू कुड हैव डन बेटर। ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, कुछ रेज्यूमे, तो सब रेज्यूमे आप देखोगे ना, 7 रेज्यूमे में खोल रखे हैं, किसी में कोई सेक्शन अच्छा किया है, किसी में कोई सेक्शन अच्छा किया है। सो इम्पोर्टेंट ये होता है सीखने में कि just don't focus on what you have made mistakes in, but learn from other people's mistakes and learn from their good work. So pick up the good stuff that they have done. Do not repeat the mistakes that you have done and what others have done, and you will end up doing a good job overall. 6-7 resumes जो हमने पिकअप किए हैं, इनको इनके सारे लर्निंग्स अगर एसिमुलेट कर लोगे, you will end up with a great looking resume for sure. और हाँ, Yes. शुरू करने के पहले एक चीज मैं बस यहाँ पर आपको रिमाइंड जरूर करूंगा कि देखिए, आपका रेज्यूमे फर्स्ट चीज है जो रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर देखेगा। Yes. और अगर आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हो या किसी का फॉर्मेट, किसी और का फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हो, टेम्पलेट वगैरह, या हेल्प ले रहे हो किसी से, फाइनल जो एक रेज्यूमे है वो आपका है, और आपको पूछा जाएगा उसके बेसिस पर सवाल। अगर आप पास थ्रू कर जाते हो या अगर आप पास थ्रू नहीं कर रहे हो, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। चैट जीपीटी आपको एक, जो हम इस्तेमाल करेंगे, आपको एक सजेशन दे रहा है, ये जरूर। हम भी आपको एक सजेशन देंगे, रिकमेंडेशन देंगे, बेस्ड ऑन द 10 plus 15 years of experience that Talvinder has, 10-15 years of experience that I have, and हमने जो देखा है। I think both Talvinder and me over the years have reviewed a lot of resumes. Not only product management, but overall, for all kinds of roles. And there are always some key Correct. things which Talvinder will, touch upon, and I'll touch upon. यस, सॉरी मेरे को थोड़ी सी सर्दी है, बट बाकी तबीयत पानी सब ठीक है। सो शुरू करते हैं। दिस इज स्टूडेंट 1,
Before we go into anything, you can see that there is a big giant block right at the beginning. ये ब्लॉक क्या है? इस ब्लॉक के पीछे उनका नाम है, उनकी फोटो है, उनकी एड्रेस है, उनकी पूरी जन्म कुंडली है. That's a problem. If your resume का A4 पेज जो है उसका ऑलमोस्ट 20%, 25% अगर सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन में जा रहा है, ये गड़बड़ है. दिस इंफॉर्मेशन शुड बी वेरी वेरी ब्रीफ. आई विल शो यू क्विकली क्या हो सकता था. आप ये देख सकते हो, ये खराब है, ये भी बैड है, ये थोड़ा बेटर है, ये इवन बेटर है. ठीक है, ये गुड है. दिस इज एक्सेप्टेबल. दिस इज प्रीटी मच द टेम्पलेट दैट एवरीबॉडी फॉलोज. इसमें कुछ और इश्यूज हैं जो मैं बात करूंगा इस रेज्यूमे में, लेकिन जो इस रेज्यूमे में अच्छा काम किया है वो है कि जो जो जगह ली है टॉप की, उतना ही देना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं देना चाहिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में. बिकॉज नोबडी केयर्स अबाउट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टिल दे हैव रेड थ्रू एवरीथिंग एल्स कि हाँ अभी ठीक है. एंड वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनको इतना ही पता करना है कि तुम्हारा कॉन्टैक्ट क्या है, ताकि इफ आई लाइक यू, इफ आई लाइक योर रेज्यूमे, हाउ डू आई कॉन्टैक्ट यू. दैट्स इट. ठीक है, ये भी अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है. ठीक है, सो प्लीज पर्सनल इन्फॉर्मेशन कम से कम जगह में लेना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्रैम अप कर दो कि तलविंदर सिंह, उसके बगल में फोन नंबर, उसके बगल में ईमेल आईडी, और उसके आगे अपना पूरा जन्म, पूरा एड्रेस. यू डोंट हैव टू मेंशन योर एंटायर एड्रेस. यू डोंट हैव टू मेंशन योर एड्रेस एट ऑल. ठीक है, इट्स यू कैन कंप्लीटली स्किप इट. एंड डोंट थिंक कि क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है इसके पीछे में पूरा एड्रेस लिखा हुआ है और एक बड़ी सी फोटो डाली हुई है. So I can list it down for you, and for listing down, let me take the help of a notepad. Give me a second. Oops. I hope nobody saw. Right. So personal details में name, sorry, full name, ठीक है, phone number with country code, email ID. I also recommend email ID में अगर आपका कोई बचपन वाला email ID होता है ना, hot36@yahoo.com, शायद yahoo.com किसी ने बनाया होगा, लेकिन hot36@hotmail.com या gmail.com बना रखा है, या फिर cutebarbie@gmail.com बना रखा है. प्लीज डोंट यूज दैट. मेक अ प्रोफेशनल, जीमेल भी चलेगा, प्रोफेशनल आईडी, समथिंग लाइक इफ योर नेम इज अक्षय कुमार, ठीक है, और आपका ईमेल आईडी है अक्की 143@gmail.com, तो नहीं चलेगा. अब आपको अक्षय कुमार तो नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से. व्हाट इज रॉन्ग विथ मी? kumar@gmail.com मोस्ट लाइकली आपको नहीं मिलेगा. तो क्या करोगे, आप kumar.akshay करके देखो. ठीक है, ये चला के देखो. ठीक है, अक्षय .kumar, कोई नंबर डाल के देखो. इट्स दीज आर ऑल एक्सेप्टेबल as long as it is professional looking, it is all okay. ठीक है, so email id professional looking. ठीक है, okay. then location, जहां तक लोकेशन की बात है, you can just put the city का नाम if you really want to put it. For example, if it is very critical for you to be in your city, you're not location independent, for example, but you're not okay moving around in cities across the country, in that case, put the city name. If you are open for everywhere, you do not have to put the city name. Okay, it is understood to some extent that okay, you are okay with going anywhere. Another thing, if you plan to apply to foreign companies, international companies, then you need to put the country name as well. So what you can do is city name in India, for example. Okay, you don't have to put in separately.
So Talvinder, I think this would apply not just if you're planning to apply to a country abroad, but also for remote working jobs, right? Yes. Country Yes. becomes valuable in that sense because Correct. time zones का वो एक आ जाता है concept remote working. Correct. Agreed. Okay, so this is all that you need. Next is photo. Photo is a bit debatable. Okay, some people recommend to add photos to the resume. Some do not. Some say do not add photos. My belief is adding a photo helps. I'm That's also in my a yes. yeah. My preference is to see a photo in the resume. Reason being, that just adds a certain character, a certain personality to the resume. That okay, this is the person, this is a human behind this resume, and that adds to my sensibility of reading a resume. So all the resumes I remember, like all the resumes that I have typically looked at, if there is a photo in it, I will typically spend a little extra time going through the resume, and I'll feel a little hurt in rejecting it because I've seen the person. That is me. Okay, Amar, what do you think? That is very true. And इसमें मैं ये भी बोलूँगा, देखो एक इमोशनल कनेक्ट तो हो ही जाता है, मगर ये एक हाँ, इम्पोर्टेंट बात है कि वो आप जो इमोशनल कनेक्ट बनाओगे फोटो के थ्रू, ये एक प्रोफेशनल इमोशनल कनेक्ट बने. माने क्या? एक सेल्फी विद in the mountains with t-shirt flying and Hawaiian t-shirt with sunglasses is not the photo to put. That is your yes, Facebook photo. That is yes, not a resume photo, right? A nice photo with a plain background, with a shirt on or something is a nice photo to put, which आपको approachable भी बनाता है. वो एक correct, ड्राइविंग लाइसेंस फोटो भी नहीं है, एक पासपोर्ट परफेक्ट फोटो भी नहीं है, एक नॉर्मल ह्यूमन का फोटो है, बट correct. प्रोफेशनल लुकिंग. Absolutely, absolutely agreed. And do not overdress it. Like it's a professional photo. Please understand the difference. Okay, professional photos basically means that you should look professional, like how you would dress up and go to an office, right? Applies to both guys and girls. Guys, I've seen photos where one, like Amar said, you will be wearing this deep cut V t-shirt, and then you're, you know, that doesn't look. We're talking about very old school uh, professional photos that you'll put up on a passport, for example, right? Uh, right. Of course, depends on company to company, depends on sector to sectors, and if you're going into certain industries, it's absolutely acceptable. But if you're getting into tech companies, no. Tech companies, you cannot go wrong with a plain simple t-shirt. Sorry, shirt. Wear a simple shirt, have a passport photo, and you're done. Like what me and Amar is wearing right now, perfect to go for a resume photo, for example. And take it on, not take on this kind of background, but take it on a simple plain white background. Plain. Yeah, plain background, basically. Okay. You can jazz it up a little bit by adding, let's say, some color in the background. You can do that, but try to just remember that it's professional. Same goes for females. I've seen on LinkedIn, there are a lot of photos which are selfies, for example, or selfies which are not even like ऐसा नहीं है कि they are professional selfies. They are the selfies, right? Which just tells me that this person is not too serious about their professional career, or they do not understand, or fundamentally they do not understand the, I don't say etiquettes, but they don't understand how to be in a professional environment. And professional loosely translates to a certain set expectations in an office, which is, for example, which is why there is, if you go to malls or go to BlackBerry, etc., if you say, give me office wear, they'll give you shirts and pants and trousers and whatnot, right? बस वही कपड़े पहन के फोटो खींच के डाल दो. That is what is expected fundamentally. यहाँ पर बस मैं एक चीज जो तलविंदर बोल रहे हैं उसके ऊपर टॉप अप करूंगा, कि देखिए जैसे तलविंदर ने बोला, अगर आप कोई फैशन इंडस्ट्री का बना रहे हो या वगैरह, वो तो एक अलग बात हो जाती है. उसका वैसे भी एक रेज्यूमे नहीं बनेगा ज्यादा, वो एक पोर्टफोलियो बनता है.
Uh, now, if you're applying to the tech world, right, engineering या operations या जो भी है, basically startup sector में. अब startups में जाते हो ऑफिस तो ज्यादातर लोग टी शर्ट्स जीन्स पहन के आपका काम चलता है, मगर जब आप रेज्यूमे में डाल रहे हैं फिर भी it still needs to be a little buttoned up, like we are wearing Talvinder and me wearing the Unacademy proper t-shirt, not a tee but a polo neck, polo shirt, half sleeve polo. So there is a certain professionalism जो फिर भी मेंटेन करना पड़ता है ना. आप तो कीप दैट इन माइंड कि दिस इज योर, यार ये समझो कि आपका फर्स्ट लुक ऑफ प्रोडक्ट है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, वो फर्स्ट लुक ऑफ प्रोडक्ट में क्या दिखाना है आपको, वो सोच के चलो आप. हाँ, करेक्ट. पर्सनली आई हैव गॉट रेज्यूमेस जिसमें कि वेरी शैबी फोटोज डली होती थी, एंड बिफोर even I read anything else, I'll remove, because I just feel that there's a cultural disconnect between what I'm expecting here versus what this person is projecting to me. Right? वो brand positioning होती है ना, brand positioning गलत हो जा रही है, because you are your brand. Just like you would not follow certain Instagrammer because उसकी values, उसके systems, उसके जो भी तरीका है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, कि नहीं वो जो बोलता है मेरे से अलाइन नहीं है, तो आप उसको कैंसिल कर दोगे, उसको रिजेक्ट कर दोगे. सेम स्टोरी विद द बिजनेसेस आल्सो. व्हेन दे सी अ फोटो एंड इफ यू आर पुटिंग अ फोटो, व्हेन दे सी अ फोटो, वो ब्रांड पोजीशनिंग में गड़बड़ हो जाएगी कि यार ये नहीं चलेगा अपने को. दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर और एनीथिंग. दिस इज सिंपली अबाउट how this person is looking at this job, which is why this person put up a photo of this type, and how this business or company wants their people to be. ठीक है, वो फंडा है. This is extrapolated, the same idea is extrapolated to how you write your resume. So I've seen a lot of grammatical mistakes. I've seen a lot of mistakes in typography. Typography in the sense, both in terms of the font choices. Comic Sans के fonts मैंने resumes देखे हैं. राइट, कॉमिक सेंस के रेज्यूमेस देखें फॉर एग्जांपल, टाइपोग्राफी में गड़बड़ होती है, टाइपोज होते हैं, आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रखी हैं. दैट same thing extrapolated, right? It just tells me that this person is careless or doesn't care enough about the single piece of document that this guy had to prepare to find a job. अगर अपने एक सिंगल रेज्यूमे ढंग से बिना मिस्टेक के बना नहीं सकता है, तो मैं इसको कैसे ट्रस्ट करूं विद द वर्क दैट आई एम गोइंग टू गिव हिम और हर. तो इस पॉइंट पर तलविंदर, आपने हमारी काफी बात हुई और आपने बनाया भी है कि ये 5 हाई लेवल वो प्रिंसिपल्स क्या होती हैं, जो मैंने कवर किया डिटेल्स में एक वीडियो में, आपने भी अपने वीडियो में कवर किया है. एक बार यहाँ लिख लेते हैं फॉर रेफरेंस फॉर एवरीबॉडी, है ना. या एक सेकंड, बैड ईमेल्स. हाँ जी, बोलिए अमर. हाँ जी, तो एक है आपने फॉर्मेट, आई थिंक इज वन पीस, राइट. योर कंटेंट is another piece, right? Your grammar is another piece, and sorry, just help me out, what are the other 2 pieces? Yeah, so how it looks, the entire piece, how it looks, the format, right? Second is the content within it. Then third is content के अंदर zoom in करोगे तो आपको 2 चीज दिखेंगी, ग्रामर दिखेगी, ग्रामर सही डालेगी कि नहीं, and fourth दिखेगा टाइपोग्राफी ठीक है कि नहीं है, ठीक है, and fifth will be the hierarchy of information. ठीक है. So format is basically how the resume is formatted, and we will show you कि out of the 7, some of them are very well formatted and some of them very poorly formatted. ठीक है. So what does formatting mean? Good format tells me that it is the person gives it a thought and worries about such nuances and makes it easier, is user friendly, makes it easier for the reader to read the entire resume. Great content is engaging. It tells me that within the first 2-3 sentences convinces me that to read the rest. Just like you would watch 5 seconds of a reel and you're like, bakwas, and you'll move on. Similarly,
the first 2-3 sentences itself is good enough for me to judge कि इसको और पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, because as a recruiter I'll typically have 100, 200, 300 resumes to review. I cannot read the entire resume. Absolutely. So if you want to stand out, then please stand out by ensuring that the content in the first 2-3 lines are interesting enough. Yeah. Then grammar is strict no. Grammar galti matlab galti. Khatam. And in 2023, there is no excuse for badly written content. You have all the tools in the world. Grammarly se lekar ChatGPT, you have all the tools in the world to write a grammatically correct sentence and grammatically correct document. एक single document बनाना है आपको अपने आप को बेचने के लिए. You're selling yourself, right? You're selling yourself for an yearly contract. That's what a job is, right? Your annual contract of 2,000 hours is worth XYZ. That's what you're doing. Okay. So you're doing this resume is a sales pitch. If the sales pitch is shoddy, how will I trust you with my work? I will not. And this one grammar becomes very, very critical. Okay. Next is typography. Typography is type of fonts, their sizes, etc. All of these things are important. So okay. Also I just add in typography, your spacing, Yes. right? Your line spacing is very, very important. Size of font तो एक हो ही जाता है, मगर वो spacing अगर आप ठीक से नहीं करो, between sections, within bullet points वगैरह, वो it shows कि how much every single one of these pieces basically आपका जो attention to detail जो एक कोई भी employer check करेगा, yes, यहाँ पर दिख जाता है. yes. और वो literally recruiter को वो इतने resumes पढ़ के उनको एक क्या बोलते हैं ना कि नस में घुस गया है कि मैं ये सब चीजों को कैसे 2 सेकंड में देख लूं कि क्या गलती है या नहीं, राइट? मतलब out of this 7 resumes ना, अगर मैं आपको glance में बता दूं, अगर मेरे पास actually आए होते तो मेरा reaction क्या होता है? Amar, please feel free to give your this one rejected. I do not even have to look into it. This rejected. This okay, perhaps something, perhaps okay. This I will spend some time on this. This I'll definitely spend some time on this. This, yes, I will spend some time on this. This rejected. So what do you think? I'll let's go reverse for me. So this one I would have immediately rejected. If you scroll down for a second, yeah, right, there is, I mean, it's not a resume for unless you are a designer who wants to portray a lot of creativity on a resume. Even then, this still does not meet the mark. It's just using up space for no reason. Correct. So rejected. ये I would have spent time trying to understand, क्योंकि मेरे लिए ना सबसे पहले कहाँ जाता मेरी नजर जाती कि ऑब्जेक्टिव है बंदा या बंदी का, कि इसने थोड़ा सोचा है कि मेरे this is the pulling point, everybody, right? That is one. Student 5. I would have gone through it different format as compared to student 6. वो 1 column format है, ये 2 column है, मगर मैं ये जरूर पढ़ता क्योंकि it is standing out. जो important sections है वो stand out हो रहा है और उस पर आते हैं हम क्यों. And neat. The reason was this is structured. Yeah. To create a structure like this, it takes effort. Yeah. And which is why I would like to reward him with my attention. Right. This one. ये भी मैं पढ़ता. I would, if I had to really be very, very hard, then I would probably drop this. If I have time, then I will pick it up. Right? Agreed. There are some obvious errors that this person has made. Yeah. Which will pull me away as well. ये मैं personally reject करता because इसमें very honestly for me formatting is a big thing and this is all.
हाँ, it's all over the place. Ooh, I didn't see this question. Yes. कि मुझे ऐसे क्या लग रहा है कि ये लिंक्डइन से कॉपी पेस्ट मार दिया है, हो सकता है, और या चैट जीपीटी में बना के वहीं से कॉपी पेस्ट करके एक डाल दिया कॉपी पेस्ट करके डाल दिया गया. This, I know what you want to do here. है। नो, दिस इज अ नो। This is a no, and what do you think of दिस this? वन इज अ नो फॉर मी फॉर वेरी सिंपल रीजन, इट इज 2 पेजेस। या Hmm. मैं यहाँ पर एक चीज ये स्ट्रेस करना चाहूंगा, आई अंडरस्टैंड कि वी लाइक टू गिव स्पेस, थिंकिंग कि रीडर को स्पेस मिलेगा तो रीडर आराम से पढ़ पाएगा। मगर Yeah. इसका एक उल्टा इफेक्ट होता है कि अगर आप एक पेज के ऊपर जाओगे तो रीडर नहीं देखेगा। रीडर 1 सेकंड में देख लेगा कि 2 पेज का मैं नहीं पढ़ूंगा। एक बेसिक प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं, जो तलविंदर और मैंने तो काफी इस पर बात की है, कि 10 साल का एक्सपीरियंस इक्वल टू 1 पेज। मैं Correct. आपको बता One रहा decade, हूँ, one experience. Correct. One page. 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस अक्रॉस मल्टीपल कंपनीज, मैं फिर भी 1 पेज में देता हूँ। Correct. और क्यों? क्योंकि लोगों को वो 1 पेज में एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वो रोल के लिए होती है। आपकी पूरी लाइफ स्टोरी, आपकी राम कहानी वगैरह वगैरह नहीं चाहिए। अगर आप Correct. फ्रेशर हो तो क्या आप मेरे को दिखा सकते हो, या तो आपके तो ऑफकोर्स एजुकेशनल जो स्कोर्स होंगे वो इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर आपने Right. एडिशनल प्रोजेक्ट्स क्या किए, मेरे को उसमें इंटरेस्ट है। क्योंकि मैं किस Correct. चीज पर आपको जज करूंगा, सिर्फ स्कोर्स पर तो नहीं करूंगा, मैं तो और भी पता करूंगा। तो थोड़ा सा ये जो 5 प्रिंसिपल हमने लिखे हैं, दिस इज नॉट, हाँ. इट इज नॉट अ लिनियर कि आप पहले ये करो फिर ये करो फिर ये, दिस हैज टू गो इन पैरेलल। पांचों Correct. एक साथ काम करने चाहिए, है ना? तो ये मेरा इनपुट होता। ठीक है. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं with all of these inputs, and let's work on uh, each बिफोर वी of गो देयर these. तलविंदर, आई एम सॉरी, वन हाँ. थिंग, इन द टॉप सेक्शन जो हम बात कर रहे थे, राइट, जस्ट टू क्लोज द लूप ऑन दैट, आई पर्सनली फील लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक होना चाहिए इन योर, जहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह लिखा हुआ है। बिकॉज अ लॉट ऑफ रिक्रूटर्स जिनसे मेरी बात होती है वो लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर चेक करते हैं, और हायरिंग मैनेजर को लिंक्डइन प्रोफाइल भी भेजते हैं रेज्यूमे के साथ। Correct. वो एक एडिशन ऊपर में होना चाहिए। So, okay. Agreed. Uh, ओके के लिए हाँ. So, आगे बढ़ते हैं. How would you suggest this person could have improved this resume? see, let's take the 5 principles, right? We'll go one by one. Let's look at the resume and let's go one by one. First of all, जो ऊपर का सेक्शन है वो तो तलविंदर ने बात की है काफी, कि बहुत बड़ा है। अब हम ये नहीं दिखा रहे कि क्या क्या लिखा है यूजर ने, क्योंकि उसमें बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मगर Right. बहुत ही सिंपल होना चाहिए। अगर आप 1 पेजर बना रहे हो, समझो 10% to 15% of the space should get utilized on that. I'm giving an approximate value. It will depend on आप फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, आप फोटो डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो वगैरह वगैरह, आप 1 कॉलम फॉर्मेट रख रहे हो 2 कॉलम फॉर्मेट, उस पर हम आते हैं, ठीक है? अब इस पर देखिए, आपने डिफरेंट फॉन्ट साइजेस इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर, और स्पेसिंग आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन के अंदर ही। जो ग्रेजुएशन वाला सेक्शन है वो बोल्ड है, जो नीचे वाला सेक्शन है वो अलग है। जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है दोनों बॉक्सेस का, इंस्टीट्यूशन क्या है ये क्या है, वो अलग है। Yeah. आपके ग्रेजुएशन कहाँ से आपने ग्रेजुएट किया है वो भी इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट? सो देयर इज मल्टीपल थिंग्स इन दिस व्हेन इट कम्स टू फॉर्मेट में इश्यूज हैं,
कंटेंट में आपके क्या कंटेंट आपने डाला है मिसिंग है, वो इश्यूज हैं। ग्रामर में मैं इसमें मेरे को अभी कोई ग्रामर में इश्यूज नहीं दिख रहा है, मगर एंड दिस इज समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट, क्योंकि हमने ये एटीएस के बारे में भी बात की है। एटीएस में ना, अगर आप डिग्री स्लैश एग्जामिनेशन लिख रहे हो और उसमें स्पेसिंग नहीं है, so that is it's not going to recognize it as individual words, right? So वहां पर एक चीज आपको जरूर देखनी होगी कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करो टाइपोग्राफी में। पैडिंग ऑफ है। अब आते हैं पैडिंग क्या इंफॉर्मेशन। होती है? पैडिंग क्या अमर 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 पैडिंग क्या अच्छा, होती है? तो पैडिंग आपकी हो जाती है कि आपके सेक्शंस के बीच में आप कितना गैप रख रहे हो। हर सेक्शन के बीच में इक्वल गैप्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर ज्यादा गैप हो, कम गैप हो। इफ वी गो टू या तो ये जो गैप है ना, इसकी बात हो रही है, ये वाला gap। इसके बारे में, और अगर मैं हायर सेकेंडरी जो टेबल है, हाँ ये वाला, इसके बारे में। ये तीनों जो गैप्स है ना, हाँ ये तीनों गैप्स अलग अलग है। अब करेक्ट। देख सकते हो लाइन की लेंथ कितनी अलग अलग है। तो ये तीनों गैप से होता क्या है ना, कि इसी जो रिक्रूटर है, जैसे मेरे से लोग बैठे हैं, अब it just happens that me and Amar, both of us are very very design focused people. मैंने डिजाइन से करियर शुरू किया था। अमर हैज आल्सो बीन दिस यूएक्स गाय फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। नजर और भी ज्यादा हम लोग घुस जाते हैं इन सब चीजों में कि यार ये गलत है, राइट? बट इवन अ रेगुलर एचआर, रेगुलर रिक्रूटर आल्सो, उसको पता नहीं होगा कि क्या हुआ है, लेकिन दिख जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये ठीक नहीं लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। वो शायद पॉइंट नहीं कर पाएगा कि वी हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि ओके दिस इज पैडिंग इज ऑफ। वी कैन एक्सप्रेस इट कि पैडिंग इज ऑफ, लाइन हाइट इज ऑफ, वी कैन एक्सप्रेस इट। बट अ रेगुलर एचआर मे नॉट बी एबल टू नो द वर्ड कि पैडिंग बोलते हैं, इसको लाइन हाइट बोलते हैं, बट वो उसको पता चल जाएगा कि यार कुछ तो ऑफ लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ है। You do not want that person to have that. I'll add few more things. This person has graduated in 2020, sorry, higher secondary 2020 में खत्म किया। This person is in the third year of the college, which is why she or he must have thought that it is a good idea to add the CGPA and SGPA, both of them, to showcase how the journey has been. Problem क्या है इसमें कि as a recruiter, I'm not so invested in your journey. करेक्ट। ठीक है, we believe everybody is but nobody is. ठीक है, so do not take it personally, but it is just the way it is. ठीक है, which means all that you had to do was in education qualification or simple education. You don't even have to write the entire educational qualification. Just write education. That's all the head that you need. Education. Within that, a single table, this table that you have made, for example, right? This table itself, this one, would have been sufficient to include everything. So you could have written here. In fact, you don't even need a table. You can simply write in bullet points the year, Yes, the class, and the CGPA. CGPA भी इसलिए simply because you are still a student. If you had graduated already, you do not have to write CGPA. You can just mention that you have done this. yeah, You can write CGPA after graduation only if your CGPA was exceptionally good. Like in this case, this girl or this guy has a very good CGPA, right? It's going good. It's above 8, which is good. So right. And if in it is above, 10th and 12th also, it is essentially in the 90 plus percentile. correct. So which is a great thing. So definitely show off when you have to show off. Where you do not have to show off, it's absolutely okay not to include any of these things in your resume. I think that's a great point Talvinder made कि एक तो this can be merged, दूसरा keep what is necessary. इसमें मैं बस एक शब्द आपको बोलूंगा, keep that in mind as you design any part of your resume, right? रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर को आपके आउटकम से मतलब है कि फाइनली अचीव क्या किया, Correct. राइट? दैट इज अ बिग प्राइमरी इन देयर हेड, एंड देन दे थिंक अबाउट अच्छा ठीक है ये अचीव किया, अच्छा अब हम समझते हैं कि कैसे अचीव किया। वो एक सेकंड क्वेश्चन बनता है। Right. Correct.
So a single table would have been great. Okay. And as regard to this, selected for level 2 in national. So if you have these variety of modalities that you have to write one single line also, you have to write this table also, you have to create that table also, do not do that, because it just tells me that one, you are taking yourself too seriously. That you think that as a recruiter, I will be interested in all of these things. I'm not. All I want to see is, okay, when did you graduate? Or, okay, you have not graduated, fine. What is your current score? Where have you reached in your current engineering? Because right now I do not know which engineering you're doing, which college you're doing, which type of engineering you're doing. I have no idea. Right? Exactly. I should see that. I should see the trending CGPA of your current CGPA, which is 8.31. Great. Your 2020 class 12, 2018 class 10th. I would like to see the numbers, the graduation scores. If the graduation score, sorry, if the 10th, 12th marks are good, are great, which in this case it is. Yeah. And then a single line which says why you stand out, because you were selected for level 2 in NTSC, top 160 among state. Or you can simply write, because top 160 among state is much more easy for me to comprehend than the previous one, because I don't have no idea what level 2 in NTSC is. Right? It is so long back for me that I don't even remember what is level 2 good or bad. I don't even know. But if you just say was selected top 160 among state in NTSC, sufficient. Right? It's sufficient. So you can recalibrate these three things into a single simple three, four bullet points, and you're good. Right? So this could have been, I'm not sure if I can write a bullet point here, but I'll just try to write it. Something like 2020 plus 12th board and what is that? 9.54 CGPA. Okay, just copy this, paste this. 18 plus 10th board, let's say this, and here 20 next year you'll graduate, right? 24 you'll graduate. So ABC engineering, PQR college, and 8.31 CGPA, right? And within this, now you can say selected in top 160 in dash state in NTSC. So then this is good, right? And I think the biggest thing you'll notice is it is a saving huge amount of space for you. Right? It is making it actually easier for the recruiter to read rather than this format right now. Correct? Correct. And I think one of the things जो फर्क पड़ता है, especially जब आप resume बनाते हो 1 version, 2 version, 3 version, 4 version, multiple versions बनाने पड़ते हैं, आपको टाइम लगता है. अगर आप इतने टेबल्स करोगे, उसमें फिर लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, कॉलम्स कितना होना चाहिए, इसको बड़ा करो, इसको छोटा करो, वो सारे आपके हेडेक्स निकल जाते हैं. ये सिंप्लीफाई हो जाता है. So yeah, so I think this is a great point. Yeah. Okay, there is another debate that happens. What is the sequence in which this information has to be, which is the point number 5 here. Hierarchy. So, yeah. So should education be at the top, or should the rest of the information should be at the top, right? My take here is you should put education at the top if you're currently a student, or your education is a key highlight. For example, you are doing your education from a very well-renowned college, university, or something similar. If it's a big highlight of your career, please do it. Please keep it at the top. Or if you are a current student. Okay. Otherwise, if it is not, or you have spent more than 5 years outside of college, like you're professional now, you have 3, 4 years, 5 years of experience, your education should come at the bottom. Your work should start shining. Even if you're from IITs and
You have the best. You have a Harvard, IIT, IIM, everything. Put it at the bottom. Your work should start shining after 4 or 5 years, right? That's the general norm. In certain situations, certain jobs, if it is clearly mentioned, I'm looking for a Harvard guy, then please put it at the top. Yeah. तो जैसे काफी जॉब्स का होता है tier 1 कॉलेज, tier 1 tier 2 इंजीनियरिंग, यू नो, तो फिर वो एक रिक्वायरमेंट आ जाती है रिक्रूटर से कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन एकदम शुरुआत में समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि मैं फिल्टरिंग ही उसके हिसाब से. So then it is, yes, important, I agree. I'm aligned with what Talvinder is saying. Ki depending on what the JD is telling you, you put it on top or below. But yes, general practice after, for me, in fact, after 2 to 3 years. क्योंकि अगर आप सोचोगे आप MBA कब अप्लाई करते हो, 2 साल एक्सपीरियंस के बाद, राइट? तो in that scenarios, usually 2-3 साल बाद start bringing in the lower in the hierarchy and put out कि प्रोजेक्ट्स क्या किए हैं, काम क्या किया है, अचीवमेंट्स क्या किए हैं, अवार्ड्स क्या जीते हो, वगैरह वगैरह, थिंग्स लाइक दैट. करेक्ट, टोटली यस. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. आई अंडरस्टैंड एंड आई नो ये ऑलरेडी दिमाग में आ रहा होगा आप लोगों के, मैं तो स्टूडेंट हूँ यार, मेरे पास डेटा ही नहीं है, व्हाट डू आई ऐड इन माय रिज्यूमे इफ आई डोंट हैव. सो वी विल कवर दैट इन अ बिट. Then let's come to work experience, where the work experience is graduate engineer, trainee intern at John Deere India Private Limited. Okay. There is a way to write this as well, by the way, which I can demonstrate. There is project title, which is vision, involves working on the database. Wow. I'm sorry, I'm very blunt when it comes to resume reviews. Consists of various different triggers developed using PostgreSQL that help in maintenance of history. Okay. Amar, what do you think? I will give my feedback after that. Yeah. So we've given already on this resume on top a lot of feedback around format and typography वगैरह. So I'm not going to get into that क्योंकि ये वाले सेक्शन में भी उस पर काफी काम जाएगा, राइट? मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग इनपुट दूंगा, विच इज समथिंग अराउंड कि क्या कंटेंट डालना चाहिए, लिटिल बिट, राइट? वेरी बेसिक. डिटेल में तलविंदर प्लीज यू नो विल एलैबोरेट एंड यू नो एज ही सेड. बट मेरे को ये वाला ये पढ़ के कुछ ज्यादा समझ नहीं आया. बहुत सिंप्लीफाइड बोल रहा हूं कि आपने क्या काम किया डेटाबेस में, आपने किया या आप सिर्फ बैठे रहे, राइट? अब आप समझा रहे हो मेरे को कि ट्रिगर्स हैं. अब यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, वेरियस कैपिटल वी में आ गया, वो तो इज अनदर फीडबैक. बट very fundamental question, let me pose it to you, the person who's written this resume. What is the work that you actually did as an engineer trainee intern at John Deere? You, not all the interns, specifically you. What is the impact that you created, right? अब ये impact not necessary हो सकता है कि भाई मैंने ये करके कंपनी की रेवेन्यू इतनी बढ़ गई. Doesn't have to be that. मगर आपने कुछ तो इम्पैक्ट क्रिएट किया होगा, इसलिए ये काम किया. आपने शायद कोई एसओपी बना के प्रोसेस इंप्रूवमेंट किया. आपने जो आप बोल रहे हो वेरियस डिफरेंट ट्रिगर्स डेवलप करके मेंटेनेंस ऑफ हिस्ट्री में किया, इससे कुछ एडवांटेज मिला होगा कंपनी को, है ना? तो आपको ये लिखना पड़ेगा. और एक कॉन्सेप्ट होता है एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स माने आई बिना लिखे, you write things like led, developed, built, XYZ, meaning you did something which helped the company in X manner, and why impact got created. That is what generally एक structure होना चाहिए यहाँ पर, जो भी नहीं है. That's my feedback. Right.
let me add some very specific details that could have been done. In a way, good that we started with this resume itself, because that kind of sets the stage for the rest of the resumes. Okay. First of all, when you have to describe your work experience, follow a set standard. One, your job is to make it easier for a person, for a recruiter, to read through or scan through the work that you've done. Okay. Now there are three pieces of information that are to be written. One is title, job title, what title were you holding, which is graduate engineer trainee intern. Okay. And number two is the company name, right? Three is the duration. And fourth, at times, is the project that you have to describe. And fifth information, like these three comes in. Okay, let me just add all the information and I'll say how these are supposed to be structured. Project, and then project details, which we also call as resume points. Talvinder, question for you. And one of the things I've noticed a lot of recruiters come back and say कि ये section जो आप लिख रहे हो ना, इसमें location भी होना चाहिए कि आपने कहाँ काम किया. Makes sense. क्योंकि हाँ, makes sense. I'll just add. So now these are all the information that you need in each block of this experience, right? So a good way to do this will be, for example, if I just modify this a little bit, I will say John Deere India Private Limited. Why? Because John Deere by itself is a respectable company, well-known company, right? It is the same that tractor company, right? Yeah. Right. So John Deere India Private Limited. Below this, I will write as graduate engineer trainee intern. Sorry, trainee intern. Okay. This and this. Next to it, I'll write the state or the city name, whatever it is. And then on the right side, sorry, I do not have much of a right side here. Otherwise, I would have done there. Yeah, now, no, I do not have much of a right side. So I'll just write it here itself. Okay, I'll just write it here, which is May 23 to July 23. Okay, this ensures that the sentence doesn't become too long. Do not use the @ symbol. I'll tell you the few reasons for that. One, your ATS, which is application tracking system, which typically scans the resume before it reaches the recruiter, will get confused. Please understand that most of these ATSs are very old school ATSs. Like they were made like 10 years, 20 years back. And they hardly get updated. Utna scan वगैरह. You don't like you have no control over it. So why to confuse it? Right? When you write an @ वो सोचने लग जाएगा यहाँ पे तो email ID होनी चाहिए थी. email ID कहाँ गई? वो पढ़ नहीं पाएगा, स्कैन नहीं कर पाएगा. If you make it very very easy, जहाँ से दिख रहा है कंपनी का नाम डाला हुआ है, नीचे डालो तो समझ पाएगा कि okay, this is a common thing. कंपनी का नाम ये है, जॉब का नाम ये है. It becomes easy for them to understand. Do not add italics. Italics is typically harder to read, so do not add italics anywhere unless it's critical. This is not critical to add italics. Do not add brackets for few reasons. Again, you do not want the ATS to get confused कि bracket डाला हुआ है, bracket का मतलब क्या है. Keep it dead simple, okay? Because you are not you're competing for attention. You want an unseen dumb algo to read your resume. You do not want it to be confused, and you'll be thinking, अरे मेरा तो resume इतना अच्छा है, क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए नहीं जा रहा है. तो इसमें एक सवाल उठेगा जो हमारे व्यूअर्स हैं तलविंदर की एक तरफ हम बोलते हैं कि स्पेस सेव करो और एक तरफ हमने जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इंटर्न है वो अलग लाइन में डाल दिया, एडिशनल लाइन ऐड हो गया. इसका लॉजिक क्या है? कुड यू प्लीज हेल्प?
लॉजिक ये है कि इन सो सी दिस ATSs आर ट्रेन्ड ऑन अ लॉट ऑफ रेज्यूमेस, उससे वो स्कैन करते हैं, ठीक है। इट्स अ टिपिकल AI वाला मॉडल, ये AI नहीं बोलूंगा, ये बेसिक ML है, जिसमें उनको बहुत सारे रेज्यूमे दिए गए थे, रेज्यूमे दे दे के उनको सिखाया गया कि भाई देखो रेज्यूमे में ये जगह पे ये इन्फॉर्मेशन होती है। Typically there is a format that is followed by IIMs and IITs, which is what a lot of these resume ATSs are been trained on. तो वो जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट्स टिपिकली एक्सेप्टेबल है, उसमें यहीं पे इंफॉर्मेशन होती है, ओके। विच इज वाई अगर वो एक्सेप्टेड है तो फॉलो करो, ठीक है। कुछ चीजों के साथ लड़ना नहीं चाहिए, रेबल नहीं करना चाहिए, यहाँ रेबल मत करो, ठीक है। उम्मीद करो तो उस पोजीशन में पहुंच सको कि तुम ATS कंपनीज को बोल सको कि यार अपना थोड़ा मॉडल अपडेट कर लो भाई, थोड़ा काम तो कर लो, है ना। You would not believe a lot of these ATSs are actually run by Oracle, That's ठीक है। interesting. That's very A interesting. lot of these HRMS, Tools. please understand, that in a lot of these companies, especially large companies, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है वैसे वैसे उनका भरोसा ऑन स्टार्टअप HRMS से थोड़ा हट जाता है कि कितना काम कर पाएंगे, कितना अच्छा कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। They want larger systems, so which is where they will start relying on softwares like Salesforce, SAPs, Oracles, because वो companies have been built around large enterprises, करेक्ट। और जो वहां पे CHRO आने वाला है उसको भी आदत पड़ी हुई है ओरेकल की, जहां भी जाता है तो ओरेकल लगा लेता है, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है, वो जैसा भी है, लेकिन उसको पता है कि एटलीस्ट यहाँ पे काम कैसे होता है। एंड उसकी जॉब भी नेक पे, मतलब हिज जॉब इज नॉट entirely dependent, but he doesn't want to take decisions which can make him look bad. So if he relies and is confident कि हाँ ओरेकल काम करता है तो मैं क्यों चेंज करूँ। Which is why in a lot of these companies, actually very old school archaic HRMSs exist, जिनके खुद के ATSs होते हैं, which have questionable accuracy when it comes to scanning. Which is why you should follow the standards, howsoever ugly they are or howsoever they are. Okay, so this is a standard that you can follow. I will avoid, so there's another format that is used, which is job title, comma, company name, space, duration, niche, you can have then you can start the project detail or something. This is another format that is followed. At is not used, comma is used. Okay. This works very well if the job title is like software developers, SDE1, SDE2. But if your job title itself is long, company name itself is very long, it gets tricky. Another challenge is, let's say you say, one second. You discover, so for example, you say I was the SDE1 at this company called SDE1, comma, I'm forgetting the name of the company. Let's say something like Sorting Hat Private Limited, right? Sorting Hat is Unacademy, right? Right? Yeah. हाँ, इसी में हाँ, so अभी Sorting Hat किसको पता होगा, right? Sorting Hat किसी को पता नहीं होगा, but Unacademy सबको पता है, right? So if you say SDE1, comma, Unacademy, you would also want to add Sorting Hat Private Limited somewhere. So what you can do is you can keep the brand name. This मैं एक और ऐड करता हूँ, job title, brand name, नीचे में company name, ठीक है। और इसी का एक चौथा वर्जन हो सकता है, job title at the top, नीचे में brand name, bracket, company name. I'll tell you this also. Now a lot of these ATSs, they will recognize the company name because their database of company is coming from the registrar. Yeah. They will not recognize so Unacademy they will recognize, but then there are a lot of companies which are not as popular as Unacademy. So their brand name has not become that recognizable. But the company name mil jayega because they will start matching.
with the registrar database. So which is why all of these mathapachi I'm telling you. In short, do not worry about how it is happening. My point is very simple. Try to follow this format wherever possible, or this format, wherever possible. अगर ये दोनों possible नहीं है, then ये try करो या ये try करो. Keep it easy for the software, for the dumb software to understand what you are writing. Number one. Now आगे बढ़ते. Project title, vision, great. Given that this is something that you did for May, June, July, 3 months in a good company, you could have written, don't use italics, project, vision, long description, by long description, 2 lines of description of what vision is. Okay, that is one. Second, I would have loved to see first line, your core contribution. See, this is a third year student. So I would like to understand what was your contribution in this, your core contribution to the project. Okay. This you can write in a bullet point, or you can simply write as a, and then you can write the bullet points. Involves working on the database? No. Always use past tense. Okay, मैं ऊपर में एक लिस्ट बनाना शुरू करता हूँ. Strict do's and don'ts. Okay, number one, always use past tense. Okay, because it has already happened. Even if you're working on something, talk about the things, because you see, resume is the proof of your achievements. It's a proof of your achievement. You're enlisting all the things that you have already done. So it has to be in past tense. Yeah. So always use past tense. Number one. Number two, elaborate with quantitative data. So for example, यहाँ पे do not write involves working on the database. You can say, I have no idea what you have done, so I'm just making things up now. This could have been, I'm assuming that from what you were saying, it seems there was some archive that needed some maintenance, and for that maintenance, we needed to build triggers across the database, that if X insertion happens or X Y update happens, then something else also needs to get triggered. Now, to do something like this, you have to invest a lot of time in mapping, in creating a complete mapping of the entire database. So created or led the creation of database topology to identify points of, or simply points of triggers. Okay. Handled the maintenance of archive product. Third point could be build database triggers. Database trigger mechanisms. Which, and again, as assuming, because again, don't know the nitty-gritties of what you did, built database mechanisms which to maintain, which helped in reducing escalations by 10%, etc. Something. Right? You can actually describe this in great detail, the small nitty-gritties that you have worked on. Okay. Now,
let me also show you how you could have improved this. Abhi isme, for example, there are a few more issues, right? So past tense, that should have been past tense, consists, instead of that, consisted of, if at all you have to use it, but don't use consisted or involved, etc. You have to use past tense, and you have to use action verbs like led, handled, built, spearheaded, etc., etc. You have to use those terms. Talvinder, इसमें थोड़ा सा, if you can take a minute and just explain action versus passive, using this example itself, I think then it'd be very much. Yeah, so I think, Amar, before we do that, I think our 1 hour is up. So Sure. let's continue in the next class, where we talk about active versus passive, and then we use ChatGPT to develop these points, right, a little further. Okay. Sure. Sounds good. All right. Yeah, ठीक है. अभी मैं ग्रामर नाजी तो हूँ नहीं कि मैं एकदम ग्रामर में, यार मुझे ग्रामर कुछ खास आती भी नहीं है. मेरे को ग्रामर इतनी आती है कि हाँ ये सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है. ठीक है, वो क्यों लग रहा है, कौन सा ग्रामर का लॉ हमने ब्रेक कर दिया, वो सब मुझे नहीं पता. हाँ, इतना पता है, रेज्यूमे के बिगनिंग में, जो रेज्यूमे पॉइंट्स के बिगनिंग में, यू शुड ऑलवेज यूज पास्ट टेंसेस एंड यू शुड यूज एक्टिव एनर्जेटिक वर्ड्स. कैसे? अभी मैं क्या ही बताऊं, मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको चैट जीपीटी कब काम आएगा. गिव मी a list of active active verbs that can be used in resume points. Also explain when to use them in a table. Okay. Achieved, administered, analyzed, built, collaborated, delivered, enhanced, formulated, guided, implemented, innovated, led, and when to use what, वो भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है. Spearheaded, trained, etc., etc., etc. Cool. Now let me do something else. Let me pick this entire thing. Yeah, sorry. Let me pick this entire thing. And let me write a prompt. Below is the experience details of a third year engineering student. Please highlight, act as a resume reviewer and point out the issues. Point out, not just the issues, point out your opinions, the good and the bad. Finally, rewrite these points by extrapolating on the points. Add whatever you feel is important. Further, add quantitative data to make the points stand out. I use Shift Enter to make line breaks if you are unaware of this. Shift Enter, typically in most softwares, allows you to do line breaks without entering. That's good. It is vague, involves working on the database. That's vague. Lack of quantitative data, there is nothing here. Duration formatting, while this is clear, a more standard format like this might be preferred. Like I said, it is easier to scan. Right?
Missing achievements or outcome. What was the result of the work? Was there any improvement in efficiency, which is exactly the quantitative aspect of how you should be writing? Now look at this. NEET, Graduate Engineer Training Intern, John Deere India Private Limited, made this project with spearheaded database management initiatives, leading to improved data integrity and accessibility. Nice. Developed and implemented 15 plus triggers using PostgreSQL, enhancing the system's capability to maintain comprehensive historical records. Collaborated with a team of 5 engineers, ensuring timely completion of project milestone and consistent data quality. Identified and resolved 10 plus database issues, resulting in 20% database efficiency. Now, you may have or may not have written. If you are listening to us right now, who has submitted the resume, please go and speak your heart out. Speak your heart out to ChatGPT, and you'll get something like this. Doesn't mean that you should make up things that you've not done. Don't do that. Yeah. Okay. But this is how you can create your resume points that are worth reading. Most of the time, I'll just tell you one thing. Whether you are a 3-year, like third-year college student, or you are somebody with 15, 20 years of experience, and I am speaking from the experience of training thousands of students in the last 5 years, all of them mid-career professionals and above, which means they had at least 5 years of experience, all the way to 30 years of experience. The most common thing that I've seen in all of them, everyone underestimates the work that they've done, including Amar. Everyone underestimates the work that they have done because you have been so close to that. You're like, यही तो किया था, इसमें क्या है? या इतना भी important नहीं था, because it comes from a certain sense of self-worth. Like it comes from a certain that कि अगर मैंने कर लिया तो आसानी होगा, या इतना important भी नहीं होगा, या फिर etc etc. While in reality, whatever you have done, if that was not important enough, you would have been fired within a month, 2 months. But you were not. Right? So please value the work you have done. Spend some time in describing that work. And you are lucky to be born or to be in this era jahan pe you have ChatGPT and stuff. Otherwise, you would have been, hanging out with your seniors, requesting them कि sir please एक बार review कर दो, अच्छे से लिख दो, अच्छे से लिख दो. उसमें भी इतना अच्छे से point नहीं आते जितना अच्छे points आपको अभी मिल सकते इतनी आसानी से. By the way, I've used ChatGPT 4. ChatGPT 3.5 may have slightly inferior results. Limited this thing, but क्योंकि जो मैंने जैसे सेशन किया था तलविंदर 3.5 ही इस्तेमाल किया था, एंड एक काफी decent direction, information मिल जाता है. And I think one of the points you made is, speak your heart out. That is essentially building your prompt, right? Yeah. Which you did. The more information in a clear manner आप ChatGPT को दोगे या कोई भी AI tool को दोगे. आजकल बहुत AI resume builders आ गए जो एक template में आप डंप कर दो डेटा, वो निकल आता है वगैरह वगैरह. बट जब तक आप उसको थोड़ा सा और क्लीनली with these 5 principles in mind, if you don't review it, you're not going to meet the standards. So correct. Use ChatGPT, use whatever AI tool, they're tools, but you are the one using them. So just keep that in mind. Absolutely. And जब आपने यहाँ notice करो, I didn't realize, I should highlight this. I could have simply written, this is a resume point, rewrite it. It would not have given you the same results. Yeah. If you want, I can rewrite this and I can just tell you. I can just show you. थोड़ा सा pollute हो चुका है ये पूरा थोड़ा pollute हो चुका है because I've already written a prompt and I've asked something. But I can actually show you कि quality would be very different. अभी करके देख लेते हैं. Can you rewrite the points below, resume points below? Make them nice. Let's see. That's it. That's it. I gave ChatGPT 2 points. It gave me 2 points.
it just changed a few words to make it just a little nicer, but हाँ. वो जो impact या achievement या वो सारे जो points थे, you asked ChatGPT कि पहले आप एक resume reviewer बन जाओ, वो context एक set हो गया था, उससे बहुत फर्क पड़ा। अब आप वापस जाओ, जो हमने पहले बनाया था वो देखो कितना फर्क है. स्पीयरहेडेड डेटाबेस मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स, डेवलपर इम्प्लीमेंटेड सो एंड सो, राइट. 4 पॉइंट जनरेट किए इसने. एंड आप नोटिस करो प्रॉम्प्ट कैसा यूज किया है. बिलो इज द एक्सपीरियंस ऑफ थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट. मैंने कॉन्टेक्स्ट सेट किया कि थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है. एक्ट एज ए रेज्यूमे रिव्यूअर. मैंने उसको याद दिलाया कि तुझे रेज्यूमे रिव्यूअर की तरह काम करना है. एंड पॉइंट आउट योर ओपिनियंस. आई डिडंट से जस्ट टेल मी द बैड थिंग्स. मैं लिखने वाला था, इफ यू रिमेंबर मैं लिख रहा था पॉइंट आउट द इश्यूज, but then I Yeah. stopped. I said don't just give me the issues, tell me all the good things and the bad things. That way I'll have a balanced perspective. And finally then I asked कि rewrite करो by extrapolating. Extrapolate क्यों बोला? Because यहाँ पे आपने जो लिखा है, ये जो resume writer है जिसका resume है, उसने कुछ लिखा ही नहीं है. I have almost nil information here. I know the sense of work that this person has done, but has written almost nothing about the work that they have done. So which is why I said extrapolate on the points. Yeah. And add whatever you feel is important. I also mentioned add kar do. So it's okay to add, go beyond the 2 points and write maybe more points. And then I emphasize add quantitative points to make the point stand out. Right? So by doing this, we got a much better. इससे better हो सकता है. I'm not saying this is the best. ये इससे भी better कर सकता हूँ मैं. थोड़ा और एफर्ट डालूंगा तो और बेटर हो जाएगा. बट दिस इज द क्वालिटी यू कैन गेट इफ यू जस्ट राइट डिसेंट प्रॉम्प्ट्स. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. लेट्स से अब स्किल समरी की बात करते हैं. ठीक है. इनफैक्ट आई विल सजेस्ट, बिकॉज यहाँ पे लेट मी जस्ट गो बैक हियर. आई एम गोइंग टू एडिट दिस एंड आई एम गोइंग टू से फर्दर add a description of the project and the work and summary of my work as well. This is the only work experience I have, and so I have plenty of space. See, this is how prompts are written, by the way. Like if you're laughing at this, this is how prompts are written. This is the only work experience I have, and so I have plenty of space in my resume. Doesn't mean I want to pack it up with junk information, but if there is anything relevant that will help getting shortlisted via ATS, then please add it in the project description and the summary. Let's see. Talvinder, before you click on submit, if you can add what role being applied for, shortlisted via ATS for the role of. I want to become. No, I am applying for software engineering roles focused on backend technologies. Yeah. See, now because मैंने ये information add कर दी, backend technologies है, पूरा context बदल गया, right? So look at this. You have relevant experience with a reputable company. You have worked with Postgre, popular RDB. So it is valuable for backend roles. Great. Your involvement in database triggers shows you understanding of automation within databases. Right? Bad description last specific जो पहले भी था. There's no mention of the impact scale, consists of various different triggers, redundant, can be simplified, overall description, blah, blah, blah. Let's see what magic this guy has pulled. The vision project at John Deere India Private Limited aimed to enhance the company's database system by automating maintenance tasks and improving overall data integrity. This project catered to multiple business units and was instrumental in ensuring efficient data storage and integral process. I'm 100% sure the person इसका resume है वो सोच रहा है ये मैंने किया था, या यही तो मैंने किया था लेकिन मैंने लिखा ही नहीं. Right? And summary of work. Now it is database enhancement, Postgres
This is so beautiful. Look at this. Right? Postgre trigger, SQL triggers, design implemented 10 plus triggers, data integrity पे काम किया, backend technologies पे काम किया, PG admin पे काम किया ही होगा, DBवर पे काम किया होगा अगर आपने Postgre में काम किया है, कुछ तो Python scripts यूज की होंगी अगर आपने ट्रिगर वगैरह यूज किया है तो, एंड फाइनली डॉक्यूमेंट भी किया. इसमें एक और पॉइंट आ सकता है जो कि पिछले वाले में था अब नहीं है, विच इज कोलैबोरेशन. एक्चुअली डेटा इंटीग्रिटी में है, डेटा इंटीग्रिटी के अंदर डाल दिया गया है. ओ ठीक है, Collaborative. हाँ ठीक है. आई वुड हैव एडेड कोलैबोरेशन सेपरेटली आल्सो. Right? A recommendation for ATS optimization, use specific keywords relevant to the backend technology. Job, for example, if job mentions SQL, ensure you have mentioned PostgreSQL. Quantify achievements wherever possible. Ensure the use of consistent terminology. The job descriptions uses database management. Ensure you use that term or similar ones in your resume. Right? Remember, even if this is your only work experience, the way you present it can make a significant difference. And highlighting the skills you use, impact, blah, 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 will work. Amar, what do you think? Now, would you consider this resume, assuming this formatting was done? Yes. And Right? I would definitely consider the resume. थोड़ा सा formatting तो होगा ही, वो तो होता ही रहता है. But it gives me very clear answers कि what has this person done? What was the project? Because otherwise नहीं तो project ही क्या है वो मैं उसके ऊपर कैसे judge करूं कि क्या bullet points हैं. और फिर मेरे को sections बना के जो titles दिए, database enhancement, triggers, data integrity, मेरे को वो information से एक in one glance I know कि अच्छा these are 5 things and these are keywords also by the way, which Exactly. ATS will love because you're using this and you're using it in a smart manner. अब देखो इस पर एक चीज है, आप एक fresher हो, meaning you're doing projects right now, right? You're a third year student, whoever's resume this is. So you don't have to worry about having extra information. This is the one project you have in hand. Enjoy talking about it. आपके दिमाग में ये नहीं है कि भाई 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उसको 10 चीज को 2 चीज कैसे सिलेक्ट करूं, वो हेडेक नहीं है, which is a great headache to not have. So absolutely yes. Use the space, and this is beautiful. It's giving you all this information. This is perfect. You know, this is absolutely perfect. Like this is great by all standards. अगर ये होगा किसी resume में, it will, provided formatting everything is in place, this will get people interested in you. Absolutely. Okay, let's go ahead. अब इस skill summary है, ठीक है, इसको देखते हैं. Below is the skill summary. Please pay attention to how I'm writing prompts, by the way. Okay. Below is a skill summary. So my prompt writing is, I am giving the context before I ask the person do anything. Okay. Person means this. You give the context, you give the role. Yeah. Then you give the output expected with the parameters. And then you give the information. So there are 5 things which are going into this. Correct. Right. So below is a skill summary of the same student. Can you give me a better list which will help the student in getting shortlisted? Also, which format should be used to list them? Should be better organized. Grouping related skills can make it easier for hiring managers or ATS systems to scan. Consider expanding on specific tools or libraries you might have used with languages mentioned. Spell out abbreviations the first time they are mentioned. Operating system is OS. Then fundamental knowledge of Python could be simplified to Python basic or Python fundamental to be concise. Non-technical skills can be rephrased to sound more professional and relevant to the job. Jैसे आपने देखा patience, adaptability, emotional balance. That doesn't sound right for a professional resume, right? Rewritten programming skills, database management, computer network, software development, tools and technologies.
easier for the ATS, easier for everyone, right? Soft skills, adaptability, same चीज को थोड़ा सा चेंज कर दिया, इमोशनल रेजिलियंस कर दिया, जिसको आपने इमोशनल बैलेंस बोला था, एंड पेशेंस को पेशेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग कर दिया. ऑनेस्टली अगर ये सब होता आपके रेज्यूमे ना, शायद मैं पक्के से शॉर्टलिस्ट करता, राइट? एंड एक जनरल रिकमेंडेशन है कि whether whenever you're talking or wherever you are presenting any kind of documentation, people love structure. Yeah. Because as humans, we are very unstructured in our own thought process. None of us start the day with, okay, day one, this heading, and this is the 5 tasks that I'm going to do. Then heading 2, iske andar 5 tasks mein khatam karuga. Nobody does that. Because that is just how our brains are. Neural networks in the brain are not structured that way. Neural networks exist in our brain, and unless an input is there is no output which is well structured. So whenever possible, like here, if you structure this, look at this and look at this, the previous points that was generated were also good, but just because this was structured better, this stands out, right? So structure helps more than you can imagine. These points got so much better, and similarly these technical skills and soft skills got so much better, right? I'm 100% sure if you make these changes, you will have a beautiful one-page document which will help you get shortlisted. Let's go further. Weather Hub, I'm sure इसमें भी कुछ बढ़िया निकल के आएगा. Okay, below is a side project that the same student did in college. How do we think? How do we name? This doesn't highlight the technical challenges faced by the student in developing this project. Further, while the overall complexity of the project may not be much, but doing it in limited resources with limited knowledge is impressive and should be reflected as such without making this obvious. So I just add one line here. Additional context is to rewrite it in a manner that it connects and helps with application to the role mentioned above. Okay. Rewrite this so that the odds of getting shortlisted via a manual scan or ATS scan for the role mentioned earlier okay, let's put this, sorry, let's put this below. Let's see. Deployed a dynamic web-based weather dashboard to provide real-time comprehensive weather update for cities worldwide. Technologies utilized employed core web technologies, including HTML, CSS, and JavaScript. Data integration, integrate third-party weather APIs to fetch and display so-and-so. Challenges overcome, navigated the complexities of API integration. Okay, I don't like this version a lot because it's too verbose. Okay, it is still better, but it is too verbose. So I'm going to fix this by saying the output is very verbose. This data, this information is going in a resume, and hence I need a scannable block of content describing the project.
I prefer bullets. See, I say I prefer bullets. I'm not saying give me bullet points. Right? I prefer bullets. Rewrite. Okay, 1 second. The specifics of JavaScript. No, feel free to extrapolate on the core technologies, like instead of JavaScript, the student may have used any JS framework as well. Feel free, yeah, plus. Use this liberty to write, to create an impressive block of information. Rewrite this project block again. Weather Hub real-time weather dashboard developed using HTML, CSS, and advanced JavaScript. Integrated third-party weather APIs for so and so, overcame challenges of API integration misinterest. This is not doing very well. I think Okay, one layer which need to add is output metrics, outcomes, achievements, because it's still becoming very, very open-ended, right? As to correct. not what impact. Let me fix this. Yeah. There is no impact of this project mentioned to the description of tech is very vague. Number 3, the challenges mentioned is very superficial. 4, if no mention of tools like Postman, etc., which would have been used for API integration, etc. No mention of QA tools and frameworks for improving the quality. Rewrite to make these as resume points. Employ the same structure of a heading and a resume point as earlier. Make the points quantitative. Let's see. Third time lucky. Okay. Better. Much better. Yes. Much better. There is still scope of improvement, but far better. Far better than where we started from, and where we are. Yeah, this was the first version that it gave us. Yeah, this was a good enough version actually. इसमें थोड़े issues थे. This version could have been done better. So I'm just going to try once again. I liked the first version given below as well, since it includes overview and other information, which is lacking here in the latest version. I like the quantitative points of the latest version. I would like you to
use the first version below and the latest version. Pick the best things of both and generate an impressive project detail. Let's see. So yeah, by the way, ChatGPT, you write one answer, one statement, and you get the magical answer. Doesn't happen. This is exactly how it works. You have to spend time. एक कॉन्वर्सेशन है कि आपको अगर एक तरीके से समझ नहीं आ रहा दूसरे बंदे को, आपको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा. जो है, I think it's actually very it's great fun, right? Exactly. I have like full detailed conversations din bhar, and I'm not sure if you guys are aware, but there's an app, there's an Android and iOS app as well. Yeah. Of ChatGPT, and the best part of that is it has an audio audio prompter as well. And trust me, I kid you not, that is the best audio prompter that I've seen for an Indian voice, Indian accent. And I have done that recording, I've done that prompting, audio prompting, even sitting in crowded traffic of Bombay, where they're honking and everything. And it still recognizes every single word with precise detail. I have no idea what magic that they're doing internally, but it is mind-boggling how accurate their thing is. So even if I'm not using ChatGPT, but I need to transfer my thoughts from my audio to text, I use that app just for that. Copy it and paste it in WhatsApp or anywhere else. I actually end up doing that. Wow. Anyway, look at this now. Developed a dynamic web-based weather dashboard, providing real-time comprehensive weather updates for over 10,000 cities worldwide. Framework and technologies to utilize modern. I would have loved if this was also bullet points. I would have loved if this was also bullet points. This is way too verbose. API integration, great. Postman, etc. Despite limited resources. Okay, so let me just try one last time. I just can't help it. Right. Let me just try one last time. This will be the next one will be the best. I like this version. I like the headings, but the description is verbose. I would like the headings to stay the same while descriptions to be in bullet points. Consider these bullet points to be resume points, and hence use action verbs, quantitative data, and highlight key achievements, tools, etc. wherever needed. Now you have two choices. You can use this version or you can choose the previous version. Right? You have two choices now. So one of the things I just want to add here, is very often we try to fit too much into one whole sentence, right? Yeah. एक practice है जो आपको it's for formatting practice, structure practice, grammar practice, सारा कुछ fit हो जाता है कि कोई भी bullet point 2 लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए. Number 1. Ideally, 1 line per bullet point is the ideal size. 1.5 is okay. 2 is maximum. Okay. अब क्या होता है जब 2 maximum भी बोलते हैं, जब when we recommend this, a lot of people put 4-5 words, comma, 4-5 words, comma, full stop, another sentence. Yeah. Suggestion is don't do that, right? Use clean, simplified, action-based. Like for me personally, if I was reviewing a resume, looking at underperformance optimization, these 2 bullet points as separate points
is very easy for me to consume. And I don't necessarily have to write a heading of performance optimization. ये जरूरत नहीं. आप ये 2 bullet point को इकट्ठा कर लो. मर्ज कर सकते हो. Correct. मर्ज करके it's 1 bullet point and reader को समझ आ जाएगा यार ये individual bullet point is about performance optimization. Correct. तो ये थोड़ा keep this in mind as you interact with ChatGPT also. How you will put it over there in your actual document. Correct. So this is completely optional. यहाँ पे extracurricular activities and interests में मैंने एक section और बना दिया है. See, given that your resume doesn't have a lot of, it's a first year resume में क्या add कर सकते हो? Sorry, first year नहीं, third year resume में क्या add कर सकते हो, right? You can add your educational details. You can add maybe an internship, maybe a couple of projects, and some extracurricular activities. Correct? So if these are the 3 things that you can add, then make the most of it, no? Yeah. Make the most of it. Then make sure that everything counts. Make everything important enough to be written. So badminton and kabaddi you do, which is both of them are teamwork and team sports. Talk about them as such. Right? Right? This is an overstretch, but you can take your judgment on this. थोड़ा सा stretch किया है. While it is true, listening to a variety of music genres and developing an interest in them helps in focus analytic thinking. But enhancing problem solving capabilities, even if it's true, the recruiter will be like, भाई इतना भी मत बोलो यार. इतना मत, थोड़ा सा this thing. थोड़ा इज्जत, हाँ, थोड़ा इज्जत. पहला point ठीक है. Cultivated focus and analytical thinking by exploring diverse musical genres. That's good. And अगर ये resume मेरे सामने होता मैं बोलता कि हाँ बिल्कुल I agree because I love music. But I would have done the same thing. अच्छा, what do you listen to? What are the different genres that you listen to? What is your understanding of so and so music? What do you think of that movie and that movie? Because you're a third year student, right? I would like to rather understand your analytical thinking rather than your specific project, because I know that in 1 year you would have forgotten about this. So here it is. This is the first resume that we have reviewed. It took us little extra time because we were also giving a lot of high level idea of how a resume should look like. But I think we have achieved something good. I think we have a much better work experience now. We have a much better skill summary now. We have a much better description of the project now, and we have a better understanding of extracurricular activities. Also, few more things. Please notice, like मैं सिर्फ इस resume की formatting की बात करूँ. एक तो हमने यहाँ formatting की बात की थी education qualification के अंदर. But यहाँ देखिए, see, do not use these kind of bullet points. They just look ugly. Use the simple, clean ones. Yes, just the solid, solid and the circle. That's it. Simple. Do not use anything else. Dusra, look at this. If the C starts from here, this CN also should start from right there. It is not starting. There is some pixel gap between where C is and where CN starts. वो क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता. Okay. Look at the gap between this C plus and this CN. इन दोनों का गैप देखो and इस लाइन के बीच का गैप देखो. So while this CN is a continuation of the previous line, which is why it should be closer to the upper line, it is actually closer to the नीचे वाली line, which is a separate bullet point. So I'll add one thing here. And this has got nothing sometimes to do with us when we are making the document. But it is a practice you have to keep in mind. कभी-कभी क्या होता है ना, आप word document में बना रहे हो, आपको लग रहा है आपने सब कुछ एकदम perfect measure करके किया है. मगर आपको PDF में convert करना, because resumes PDF is the general practice. कभी-कभी sometimes word document is asked, but very rare nowadays. It's mostly PDF. तो PDF में जब आप convert करोगे, तो ये gaps आपको दिखेंगे. कभी-कभी वो वर्ड में दिखते नहीं, मगर आप जब कन्वर्ट करके देखोगे, then you have to go back and fix it. Just keep that in mind as you do this. Correct. So be very careful about these formatting issues, because it just tells me that you are not
you're careless, or just tells me that you do not have any attention to detail. Both of them are bad, and you do not want to be seen like that. Yeah. Okay. So great. Student 1 is done. I hope you guys liked it. We will jump to student 2. Okay. Before we jump, Talvinder, I just want to say, student जो भी थे, bless you. I think one of the points in all of this that we discussed, है ना, जो Talvinder ने कहा, I think is, for me, what I would suggest is very vital. You don't underestimate the work you've done. Okay? Then you will be able to figure out to create the content की लिखना क्या. ठीक है? Step 1. Step 2, which I am adding to that, which is, एक बार आपका content बन जाता है, ChatGPT से खुद बनाया आपने वगैरह वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह एक साइड होता है, मगर वो कंटेंट के अंदर डोंट लाई, डोंट एम्बेलिश माने उसको बहुत फैंसी मत बनाइए. करेक्ट. कि सोच के कि अच्छा हाँ फैंसी बनाऊंगा, कुछ एडिशनल डेटा जो रेलेवेंट नहीं है मैं डाल दूंगा, वो चल जाएगा. इट वोंट. करेक्ट. Stick to what you've actually done and trust me, that is worth it, right? Exactly. And learn how to just एक positioning जो बोलते हैं ना, उसको position कैसे करना है वो सीख. तो ये दोनों पीस आप थोड़ा याद रखिएगा. But you have the content in your resume, student 1, whoever you are. Yeah, you have the stuff. You have just not valued yourself and the work that you have done enough to write it properly. Yeah. Okay. So please make that change, and you will see the difference. All the best. Also, it takes a lot of courage. I just want to point it out. It takes a lot of courage to actually upload a resume, knowing fully well that that your resume is going to be publicly criticized. It takes a lot of courage. So thank you for that trust. Thank you for putting it out there, and you are actually helping so many other students by being an example. Okay. So thank you so much. You've done a fantastic job, and we hope that you achieve everything that you want to do in your career. ना लगे job तो हम दोनों को बता देना. We'll help you out. Student 2. Okay. पिछले वाले में सारी बकबक मैंने की है, काफी सारी बकबक मैंने की है. अमर, time for you to take over. तो इसमें सबसे पहले again आप engineering background से हो, तो the cleaner your resume, the better. Now what does that mean? आपने ऊपर जो ये पिंक डाला है, आपने कहीं से उठाया होगा कि ये एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट चल रहा है, बीच में मैं अपना नाम डाल दूंगा वगैरह वगैरह, मगर ये टेम्पलेट जो है ना, एक डिजाइनर का टेम्पलेट की तरफ थोड़ा जाता है. स्टिल नॉट देयर, मगर थोड़ा सा एक क्रिएटिव टेम्पलेट टाइप डायरेक्शन में जा रहा है. अवॉइड. टेंडेंसी एक होगा, बट अवॉइड. Second, I'm assuming that the black box below is your photo, right? You are using ऊपर में भी जगह वेस्ट किया आपने पिंक डाल के, नीचे में भी फोटो डाला है. आप इसको मर्ज कर सकते हो, फोटो को कम कर लो, वो पिंक बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है. And you are then, I think, missing all the other points which we mentioned in the first resume, which is कि आपके ऊपर वाले सेक्शन में बायो डेटा जो बोलते हैं वो क्या आना चाहिए, राइट? आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल, आपका फोटो अगर जरूरत है, आपका लोकेशन अगर जरूरत है, आपका लिंक्डइन. These are vital points, right? Which you are therefore missing. एक बहुत पुराने जमाने में होता था कि ये सारा कुछ हम फुटर में डालते थे, हेडर फुटर, है ना, डॉक्यूमेंट में. वो दिन गए. ये सारा इंफॉर्मेशन सबसे ऊपर होना चाहिए. तो सबसे पहले तो वो आप जरूर स्टूडेंट टू whoever you are, right? The other thing which I will say, which I like, आपने about me एक सेक्शन बनाया है, right? टेक्निकली अबाउट मी ना लिख के आप ऑब्जेक्टिव या समरी आपका जो है प्रेफरेबली ऑब्जेक्टिव करके टाइटल रख के ये सेक्शन भी आप ऊपर का जो पिंक सेक्शन है
उसमें इंक्लूड करिए. So then your top section becomes very simply in one snapshot, in one go. Key information, वो एक फोटो से इमोशनल कनेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इमीडिएटली पता चल जाता है रिव्यू, जो भी रेज्यूमे रिव्यू कर रहा है, कि everything in one go, what is there. Now, does this person seem interesting to me? Now let me figure out more information. Correct. So that is piece number one that I will say, right? And first I'm going to go into all the pieces a little bit, and then we can go in depth individually into each piece. अब आपने यहाँ पर चूज किया है एक डबल कॉलम फॉर्मेट. ये भी एक चीज है जो तलविंदर और मैंने भी काफी डिबेट किया है इसके ऊपर. इट इज अ वेरी डिबेटेबल थिंग. लॉट ऑफ रेज्यूमे जो ऑटो एआई टूल्स हैं आज के दिन में, वो डबल कॉलम सजेस्ट करते हैं. एक 3-4 साल पहले मैंने naukri.com के थ्रू भी, उनके पास एक रेज्यूमे बिल्डिंग टीम है, वो भी मैंने उनको बोला था आप ये एक पेमेंट करके कि आप रेज्यूमे बनाइए मेरे लिए. उन्होंने भी 2 कॉलम फॉर्मेट बनाया. Now, why am I bringing this? I personally recommend, especially for people who are starting off, and ATS जहां पर काफी इस्तेमाल होगा, सिंगल कॉलम फॉर्मेट जैसे पहले वाले रेज्यूमे स्टूडेंट 1 ने किया था. It is generally, as what I have seen, more ATS friendly for the older ATSs. 2 कॉलम फॉर्मेट, टेबल्स बहुत सारे, इमेजेस बहुत सारे, वो ATS को ज्यादा समझ नहीं आता कि मैं इसके साथ करूंगी. ठीक है. करेक्ट. Someone like me today, I am using a 2 column format. Why? Because for me, ATS I use less, and it is mostly through 15 years experience, the relations I have built, internal referrals ke through, where my resume goes. Right? Correct. So उसके लिए बहुत अच्छा रहता है 2 column. But for a second, let's say आपने 2 column इस्तेमाल कर लिया. I would suggest switch your columns. Left hand side पर आपका जो work experience है, Talvinder, sorry if you can scroll down. Yeah, 1 second. This is all the resume. This is it. तो मैं assume कर रहा हूँ यहाँ पर आपने जब कॉलेज किया था, आपने कोई प्रोजेक्ट्स तो किए होंगे, KLN कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपने इंटर्नशिप्स किए होंगे, राइट? करेक्ट. These are things you need to bring up, and that needs to be the first column on the left hand side. Correct. Right? That is another very, very important piece. And then you can mention things such as your, and this can be debated, the educational background you can put on the left below, or you can put it on the right hand side. You can switch it around with workshops, my opinion, right? I would put educational background on the left hand side, below whatever projects, internships you have done. Right hand side पर top right पर आपका hard skill आएगा, जो आपकी skills है, hard skill, soft skill जो भी है, उसके नीचे workshop आ जाएगा. तो 4 quadrant अगर आप देखोगे, not equal sizes necessary. Top left quadrant आपका आ गया projects, internships, basically experience, in a way work experience क्या है आपका. Bottom left quadrant आ गया आपका educational background. Top right quadrant आ गया आपका skill section. Bottom right quadrant आ गया आपका workshops. Yeah. Right? That's what I would follow. The sizing of your column, your left hand side column will be larger, your right hand side column will be smaller. अब ये जो मैंने आपको बताया है, इसका लॉजिक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट. नहीं तो आप बोलोगे कि मैंने ऐसे कर दिया मगर ये चल नहीं रहा. हम पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, हम पढ़ते हैं टॉप टू डाउन, राइट?
तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एक रेज्यूमे रिव्यू के लिए, वो क्या है? इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का जो पॉइंट है वो है आपका एक्सपीरियंस, आपने क्या किया है, तो वो लेफ्ट टॉप पर आ जाए। जो समझो आप एक पॉइंट तलविंदर ने बोला था पिछले वाले रेज्यूमे में कि कोई कोई जॉब्स होते हैं जहां पर आपको पूछते हैं आपका, आप आईआईटी से हो, आईएम से हो, आईएसबी से हो, हाँ या ना, टियर 1, तो वो इमीडिएटली दिख जाता है बॉटम लेफ्ट पर। यू कैन ऑल्सो ऑल्टरनेटिवली टू ब्रिंग स्ट्रेस टू इट, ऑब्जेक्टिव में अगर आप अप्लाई कर रहे हो ऐसे रोल में, ऑब्जेक्टिव में ही लिख दो कमिंग graduated from tier 1 IIM IIT XYZ looking Yeah. forward to XY, क्योंकि instantly भाई आप लेवल 1 क्लियर हो गए, टियर 1 से हो, चलो अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। दैट इज द जनरल स्ट्रक्चर दैट आई वुड फॉलो। अब देखो यहाँ पर आपने डिफरेंट फॉन्ट साइजेस इस्तेमाल किए हैं, स्पेसिंग काफी टूटा हुआ है, आपने कहीं पर पाइथन प्रोग्रामिंग को कैपिटल्स में कर लिया है, एट इज कैपिटल ए, सो देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रामर and formatting issues over here, right? I'm being a little blunt here, sorry for that, student too, but ये resume pass नहीं होता for many many such reasons. अगर आप हार्ड स्किल्स के बारे में बात कर रहे हो, आप ये नहीं लिख सकते हैव अ नॉलेज इन फ्रंट एंड, नहीं, सिंपली राइट योर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज HTML CSS, programming languages Java, database this thing SQL, NoSQL, whatever, Postgres, जो भी है XYZ, that is the information needed. in skills क्या है? आपका जो एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स है वो आ जाता है टॉप लेफ्ट वाले सेक्शन, एक्सपीरियंस, कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे किया है। मे बी आपने कोई प्रोजेक्ट बिल्ड किया है जो HTML CSS करके, शायद आपने एक ऐप बिल्ड किया है जो आपने ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पर डाल के आपने एक्सपेरिमेंट किया, फ्रॉम स्क्रैच मेरे को बिल्ड करना है, राइट? नाउ दैट इज अ फैसिनेटिंग थिंग टू टॉक अबाउट। I don't know if you've done it, but yes, that could be one. आपने वर्कशॉप अगर अटेंड किया है on my engineering, Asia virtual experience program, right? Assuming this is little to do with virtual reality, for example, assuming that is fantastic, right? But what did you learn? आपने उसका एप्लीकेशन कैसे किया, वो आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो। So this is a general first point review, Talvinder, from my side, without going in depth into each section, but yes. Thank you so much, Amar. I think all the points hit home. I think fundamentally what has happened here is, student 2, maybe you are not too confident about whatever you have done. Maybe you have not even done internship, for example. आपने internship भी नहीं कर रखी है, कोई बात नहीं। आपने कुछ workshops कर लिया, आपने अपने कॉलेज का सारा काम कर लिया, and you finish in 2021. अब पिछले 2 साल में आपने कुछ तो काम किया होगा, कोई तो जॉब की होगी। I'll assume the worst. आपने शायद for some reason, because market भी अच्छी नहीं रही, for some reason you were preparing for the competitive exam, जो भी reason से you didn't pick up a job also. ठीक है? So you are here now. What do we do? Yeah. ठीक है? Let's assume that. From here, from today, the day you start watching this video and you see us giving you recommendations, start by going on Upwork or Fiverr, or reach out to your friends who are already employed to look for some projects. Upwork and Fiverr पे इसलिए जाना because आपको वहाँ projects मिलेंगे, बोलो मैं free में करके दूंगा. But do that only in things that you're comfortable and confident. If you're not, please do not go to Upwork or Fiverr. So let me just take a step back in that also, कि आप उसमें भी confident नहीं हो अभी, तो क्या करोगे? Online खूब सारे courses available हैं, Unacademy के courses भी available हैं, that you can take up, और pick up some project. YouTube पे जाके आप देख सकते हो, बहुत सारा material available है, जहाँ से आप कोई भी छोटे-छोटे projects करके अगले 1 महीने का target करो कि मैं 3 छोटे projects करूंगा और एक बड़ा project करूंगा.
प्रोजेक्ट्स करो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, शोकेस करने के लिए, बस अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। कैन यू डू दिस वर्क और नॉट? ठीक है। अगर आपको प्रोजेक्ट्स यानी कि कोर कोडिंग नहीं करनी, आप देख सकते हो कि एआई में क्या मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, जैसे कभी इंग्लिश लिख के दे रहा हूँ, तो कैन यू डू द सेम थिंग? सी इफ यू कैन डू इट। If you can do it, you can use this at also for building your future career. Either Absolutely. way, either way, you need to find out what would you like to do. And for that, 1 month is more than enough to find at least something that you can focus on for the next 1 day. Once you have that in place, then start doing some projects on Upwork or Fiverr. From there, you will get some experience. That experience you can start listing down here after 3 months, 6 months of working with Upwork or Fiverr. You can start listing down these projects. You might even not get paid for them, or you might get paid very little for them. Either way is okay. Whatever the case, pick those projects up, and build your resume that I built this project, I built this project, I built this project, and in about 6 months to 9 months, you'll be in good shape. If you want, let me just show you the magic of ChatGPT a little bit more. Okay. I am an engineering any starter software engineering role, but I am not confident in any specific tool or technology. Build me a learning path that helps me compete and stand out in 2 to 3 months of self-paced learning. Recommend me YouTube videos or other free resources from companies, free resources that will help me learn. I have seen some free resources available on GitHub as a list of links to other resources as well. Feel free to recommend them as well. I would this like this learning path to include some activities and projects as well that I will be able to showcase in my resume. I can go on and on and on, but I think this gives you some sense of how you can do this. Let's see what it gives you. And voila. See, build a simple REST API for your library or e-commerce database. Great product.
Great activity. Personal portfolio, simple REST API, database design, GitHub repo, and you're good. Let me just put this one more prompt. How long can you create a study timetable as well for me to go through the learning path you suggested? I would like a healthy, realistic study plan. Study timetable. There you have it. I can go even deeper by saying, make me a timetable properly, Monday, this time, that time, this video, that video, etc. I can do that also. But I think this gives you a good enough idea of how you can structure your timeline. Cool. So student 2, please implement the changes that Amar has suggested. My preference is always a single column view for a very simple reason. That single column view, so I'm optimizing for ATS. ATS prefers single column views, single column, because it's much easier to scan. The chances of it going wrong is almost zero. So क्यों पंगे लेने, ऐसे ही जॉब मिलना मुश्किल है, और पंगे क्यों ऐड करने लाइफ में, राइट? सो कीप इट सिंगल कॉलम, मेक इट वेरी वेरी सिंपल. जो पिछला स्टूडेंट 1 का जो अच्छा काम था, अच्छा चीज थी, वो फॉर्मेटिंग थी कि वन एटलीस्ट उसने 1 कॉलम व्यू यूज किया था. सोच के किया कि नहीं किया पता नहीं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, सिंगल कॉलम करो, ये सब काम करो, प्रोजेक्ट्स को ऐड करो और डिटेल्स को थोड़ा फिक्स करो. You will have a good shot at it. All the best. With this, we come to the end of our second class. We have 5 more resumes to go, which will cover. We will not cover all the 5, but yeah, we will cover the next one in the next class. I hope ये मजा आ रहा है. आपको कुछ specific questions हैं, कुछ specific चीजें पता करनी है, please comment section किस लिए भाई, comment में डालो. We would love to give you feedback. We'll love to give you resume reviews. कुछ भी अगर आपको डाउटफुल लग रहा है, आपको कंफ्यूज्ड हो वगैरह वगैरह, ये ठीक रहेगा या वो ठीक रहेगा, या फिर मैंने कुछ काम ही नहीं किया है, मैंने बहुत सारा काम कर रखा है, ब्ला ब्ला ब्ला, प्लीज पुट देम ऑन द comment. The more you do it, the better it is. Good for you, good for everyone. Yes. And from my side, just I'll end from my side with one very simple thing. देखिए, हम multiple resumes review कर रहे हैं. आपको लगेगा शायद कि मैं बस एक वीडियो देख लूं. मेरा सजेशन जरूर ये रहेगा to look at all the videos, right? Think of it like a learning course. And your resume is by far the most important thing. तो अगर आप एक कोर्स कर रहे हो तो वो सारे चैप्टर्स तो पढ़ने पड़ेंगे, है ना? फॉर एग्जांपल यहाँ पर सॉफ्ट स्किल के बारे में आपने जो लिखा है स्टूडेंट 2, बहुत डिटेल में हम गए नहीं, बट इफ यू सी जो हमने स्टूडेंट 1 के लिए किया कि सॉफ्ट स्किल्स क्या मेंशन करें, कैसे मेंशन करें, उनको रेलेवेंस कैसे दिखाएं, वो सब वहां पर कवर्ड है. So spend some time and look at each video. That's all I'll say. But yes, put your comments. Would love to know how y'all are liking this, what more y'all want to see, so we can then modify. So far हमने 2 लोगों के रेज्यूमे रिव्यू किए हैं, और साथ में उसी डिस्कशन में हमने बहुत सारी बातें की है about what makes a good resume and how can you make it better. कुछ भी हालात हो, कुछ भी सिचुएशन में, अब how do you make that look and feel better. Student 1 के कहाँ ChatGPT as sort of an assistant on the side to do a lot of the work for you, which you can then use and build on. Correct. तो ढेर सारी जो लोड लेना है ना, वो हमने ChatGPT को ऑफलोड कर दिया है.
कि हमारा कंटेंट, लेकिन सोचना सोचना आपको पड़ेगा, सोचना, यू विल हैव टू डू द थिंकिंग पार्ट on what do you want to highlight in your resume, what do you want to use in your resume to make it look better, feel better. Yeah. ठीक है, वो आपकी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करेगा आपके लिए, आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन वो सोचने के बाद अच्छा प्रॉम्प्ट लिखकर आप बहुत अच्छी चीजें करवा सकते हो चैट जीपीटी से। ठीक है, तो जिस चीज को आपको हफ्ते लग सकते थे वो अब आप दिनों में कर सकते हो या घंटों में कर सकते हो। ठीक है, लेट्स जंप टू स्टूडेंट 3। once again, wherever you see this black box, this thing, इसके पीछे उनकी जानकारी है जो हम लोग छुपा के रखी है। ठीक है, सो हमने सबको एनोनिमस रखा हुआ है, हमें भी नहीं पता है, हमें भी हेल्प मिलती है एक्चुअली, बिकॉज व्हेन वी आर reviewing a resume without looking at the face, the name, the details of the person, we are able to be more impartial and we can tell you that what a typical recruiter, जिसको कोई आता पता नहीं है कौन पर्सन है क्या है, वो कैसे बिहेव करता है। ओके, इस रेज्यूमे की कहानी शुरू करते हैं। ओके, कहाँ से शुरू करें? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, this resume should not be, any of your resume should not be more than 1 page unless आपके पास 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट उसमें भी 11 साल का एक्सपीरियंस तो भी 1 पेज रखो, है ना, तो एक डिकेड इज 1 पेज। ठीक है, वैसे सोच के रखो, 2 पेज तो होना ही नहीं चाहिए, नो मैटर व्हाट योर सिचुएशन इज। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यार कोई तो कॉपी पेस्ट में गड़बड़ आपने कर दी है एंड यू आर केयरलेस इनफ और अनबॉदर्ड इनफ टू नॉट इवन करेक्ट दिस। जेबी मेमोरियल, मानस एकेडमी, पिथौरागढ़ वुड बी ना सिंगल लाइन, जो मल्टीपल लाइन में आ चुका है, उसको आपने मॉडिफाई भी नहीं किया। बेसिकली कुछ आपने एक्सेल में था या कहीं था, आपने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, वो पूरा फॉर्मेटिंग हिल गया। मगर एंड ये ये एक चीज होता है काफी, शायद आपने अभी सोचा कि ठीक है मैं अभी बस भेज रहा हूँ कि एक रिव्यू होगा, टेस्ट होगा, तो कोई बात नहीं। एक बात जरूर सोचिएगा हमेशा कि वेरी ऑफन हमने भी काफी जो रेज्यूमेस पढ़े हैं, तलविंदर ने पढ़े, मैंने पढ़े हैं ओवर द इयर्स, ऐसे लाइव एग्जांपल्स भी आते हैं। करेक्ट, एंड इट इज वेरी सिंपली कि कहीं पर व्हेन यू कन्वर्ट टू पीडीएफ और व्हेन यू कॉपी पेस्ट फ्रॉम प्लेसेस लाइक, आप चैट जीपीटी से लेके भी कॉपी पेस्ट करोगे, आप फॉर्मेट नहीं करते हो, उसी का एक बना के भेज देते हो। करेक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज एनी रिक्रूटर, हायरिंग मैनेजर जो भी देखेगा सीधा रिजेक्ट कर देगा। करेक्ट, आपके मल्टीपल फॉन्ट साइजेस चल रहे हैं, आपके मल्टीपल फॉर्मेटिंग स्टाइल्स चल रहे हैं, ये सारा कुछ हिला हुआ है, तो कहीं पर कुछ बड़ा गड़बड़ हुआ है। एक चीज जो इमीडिएटली मैं बोलूंगा जो अच्छा किया है वो है, जैसे आपका एसोसिएट एडिटर, आपने 20% इंक्रीज लिखा हुआ है, तो आपने एक वैल्यू एकदम शुरुआत में डाल दी है, बट दैट गेट्स लॉस्ट इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दीज अदर प्रॉब्लम एरियाज। तो करेक्ट, सोच के आगे बढ़िए। करेक्ट। इसमें यहाँ पे आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, उसके आगे का जब देखो ये अलग ही आ रहा है, आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करके डाला है, उसके नीचे आपने एक रैंडम पॉइंट डाल दिया है, उसके नीचे सिमिलरली यहाँ पे भी रैंडम पॉइंट डाल दिया, ये पूरा सेक्शन पूरा बिगड़ा हुआ है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस, ये आप नहीं यूज करोगे, प्लीज यूज स्टैंडर्ड बुलेट पॉइंट्स। राउंड बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, देन बायोविजन डिपार्टमेंट ई मैगजीन, बायोटेक डिपार्टमेंट यहाँ पर है, जो कि बेसिकली ये हो यहाँ पे होना चाहिए, बायोटेक डिपार्टमेंट ई मैगजीन, दैट्स व्हाट इट इज, राइट? बायोविजन वुड बी द नेम ऑफ द मैगजीन एंड बायोटेक डिपार्टमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू वर्क फॉर, राइट? तो इसका नाम और एसोसिएट एडिटर वाज द एक्चुअल टाइटल दैट यू हेल्ड। इसका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट फाइल, जैसे ये, ठीक है, ये रोल का नाम है, कंपनी का नाम है नीचे में, इसमें भी इंप्रूवमेंट हो सकती है लेकिन बेटर है। मशीन लर्निंग इंटर्न, स्मार्ट ब्रिज। जनरल ये काफी दिस honestly there is a lot of good things about this particular resume, Talvinder, I think कि या I know कि सिंगल कॉलम नहीं है, which is what we recommend mostly,
डबल कॉलम इस्तेमाल किया है, मगर डबल कॉलम में सेक्शंस क्लियर है, करेक्ट एक्सपीरियंस पर ज्यादा फोकस है, एजुकेशन टॉप करेक्ट राइट पर है, प्रोजेक्ट्स उसके नीचे है, फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, कुछ समझ नहीं आ करेक्ट। रहा। क्योंकि घुसाना था ना उसको, दो हाँ दो कॉलम कर दिया ना, 2 कॉलम में घुसाना हाँ, था, तो अब क्या करेगा? तो फॉन्ट साइज यहाँ पर बिगड़ जाता है। आप हमने जैसे बोला कि देखो मैक्सिमम 2 लाइन्स पर बुलेट पॉइंट, right, in a हम्म। previous video, that या stands true whether it is single column or double column. Please remember करेक्ट। this everybody, ये एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है। आपने समझो इस्तेमाल कर लिया 2 कॉलम, वेरी गुड, मगर वो रूल चेंज नहीं होगा रूल वही रहेगा। तो तो ये, हाँ मैं फुल्ली एग्रीड कि ये, अब कुछ रूल्स को ना तोड़ना नहीं है आपको, ठीक है? रूल तोड़ने के लिए पहले एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, जो आप अभी नहीं हो। जैसे मेरे करेक्ट, हैंड को यस, रिकॉग्नाइज कर ले रहा है, ठीक है? तो रूल तो तब तोड़ो जब एक्सपर्ट हो। यार मतलब मैं नहीं तोड़ूंगा ये रूल। मैं सिंगल कॉलम, मुझे रिज्यूमे बनाना पड़ जाए, मैं सिंगल कॉलम बनाऊंगा, ठीक है? 2 कॉलम नहीं बनाऊंगा, सिंगल कॉलम रखूंगा। 2 पॉइंट के ऊपर, 2 लाइन के ऊपर एक बुलेट पॉइंट नहीं होगा। ये चीजें मैं खुद ब्रेक नहीं करूंगा कभी भी, ठीक है? सो डोंट ब्रेक इट, सिंपली पुट, है ना? नहीं, एब्सोल्युटली फेयर, एब्सोल्युटली फेयर। एंड इसमें लाइक वन टू अदर गुड थिंग्स दैट आई कैन सी इज, जैसे गिटहब का लिंक डाला हुआ है, यस। राइट। आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट किए 90%, हाँ 95% एक्यूरेसी, उसको बोल्ड कर दिया है करेक्ट। ताकि अटेंशन जाए। आपका जो आपने एकदम शुरुआत में आपने एक रेकमेंड किया था स्ट्रक्चर, जहां पर योर रोल माने योर डेजिग्नेशन या जो भी था बिलो दैट कंपनी हाँ नेम, दैट इज देयर, राइट। करेक्ट। एक यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि ब्रेनो विजन आपने कैपिटल में लिखा है, स्मार्ट ब्रिज छोटे में, डिजाइन डेजिक ने एनए वॉट एवर द कंपनी इज, सॉरी आई एम नॉट बीइंग एबल टू प्रोनाउंस इट, वो कैपिटल में। मे बी दैट इज द एक्चुअल वे इट इज डन फॉर द कंपनी, बट यस जो रिक्रूटर है, रिक्रूटर को ये नहीं पता। सो उसमें भी एक फॉर्मेटिंग में क्लीन अप जरूरी हो जाता है। तलविंदर, थॉट्स? absolutely yes. And a brain or vision is not the, maybe the brand name may not be the actual company, हम्म हम्म and either ways, if see if the company is like, Google or हम्म Unacademy, हम्म, then just putting the name is enough कि नाम ही काफी है। या But where it is not enough, please add a link, या, एब्सोल्युटली है ना? एब्सोल्युटली, जैसे अभी मैं यहाँ हाइपरलिंक पे कर सकते। हाइपरलिंक कर, जैसे अभी ब्रेन और विजन आपने बोला है, तो मैं जरा सर्च करता हूँ। ब्रेन और विजन सॉल्यूशंस, अब ये है या फिर ये है, ये अलग पंगा हो जाता है, करेक्ट। राइट? आई डोंट नो व्हिच वन यू टॉकिंग अबाउट। यहाँ ब्रेनो विजन का इंटर्नशिप स्पीड दिख रही है मुझे। अलग भी एक और ब्रेनो विजन है विद स्पेसिंग, अच्छा आई मीन या आई डोंट नो व्हिच कंपनी। एग्जैक्टली राइट। सो स्पेशली व्हेन द कंपनी इज नॉट पॉपुलर, यही दिक्कत होती है कि कौन सी कंपनी की बात हो रही है। स्मार्ट ब्रिज भी देख लेते हैं। यस, smartbridge.com दिख रहा है, नेक्स्ट जेन टैलेंट पूल विद स्किल इन IoT। तुमने क्या किया है? अब ये ट्रांसफॉर्मेशन है .com है, और ये क्या है? ये भी ये द स्मार्ट ब्रिज है, और ये स्मार्ट ब्रिज है। ये स्मार्ट ब्रिज है। कौन से वाले ब्रिज पे चढ़े थे भाई? हमें कैसे पता चलेगा, राइट? तीसरा भी देख लेते हैं, डेसिकना, डेसिकना, डेसिक Q&A, देसी Q&A। देसी क्यूएनए, अच्छा ओके, यहाँ ओके। स्पेसिंग में हाँ इशू होगी ये इतना यूनिक है, नाम इतना यूनिक है कि भैया एक, इसके ऐसे एक ही है। मगर यहाँ पर वो समझ नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ द वे इट्स रिटन। इट्स फेल्ट लाइक सम फ्रेंच कंपनी ऑफ सॉर्ट्स। राइट राइट, एंड ऑल्सो बाय द वे, यहाँ देखो, ये तुम्हारा जो डंडा है, स्पेसिंग मिल गया है। ये चिपक गया है इसके साथ। हाँ, तो ये क्यों हुआ है, ये भी इट्स इम्पोर्टेंट। आपने probably you've used some kind of ruler, so your location मैं भी बता देता हूँ। Lincoln is in the अब same line, but you've not taken into account September is larger compared to the other these things, तो वो अंदर घुस रहा है।
तो जनरल मैं पैटर्न बता देता हूँ कि जब भी आप ड्यूरेशन डाल रहे हो, मंथ्स डाल रहे हो, डेज डाल रहे हो, ट्यूसडे मंडे वो डाल रहे हो या फिर मंथ्स डाल रहे हो, ऑलवेज यूज 3 कैरेक्टर्स। यस ठीक है, यस MONTUE WEDTHUFRISATSUN, एंड वैसे ही JANFEBMAR ऐसे चलेगा, सुनो ठीक है। बिकॉज इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी, आप कुछ भी फॉर्मेटिंग कर लोगे वो फॉर्मेटिंग की टेढ़ी बड़ी हो जाएगी, बिकॉज कहीं पे आपको मई 2022 लिखना है और कहीं पे सितंबर 2023 लिखना है, तो कैसे होगा? फिट ही नहीं हो सकता है, especially in a place like in a resume for example, unless you are using, ऊपर से आपने 2 कॉलम व्यू यूज कर लिया, वो अलग पंगा हो गया, जगह ही इतनी है आपके पास, है ना। एंड आई नो आई कैन सी तलविंदर दैट स्टूडेंट ने एफर्ट डाला है हाँ कि मैं थोड़ा सोच के बनाऊं, कितना इम्पैक्ट है वगैरह वगैरह, एंड आई गेस लोग एक्सपीरियंस है, दिस पर्सन हैज एक्सपीरियंस, सो थोड़ा सा रेज्यूमे भी कैसे बनाते हैं, द पर्सन हैज अंडरस्टूड अ लिटिल बिट। बट इसमें भी फंडामेंटल जो एक जैसे बहुत सिंपल मिस्टेक्स हो जाते हैं, आपने हर चीज को बोल्ड बना दिया इतना ज्यादा दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द वैल्यू, नाउ आई एम लुकिंग एट एवरीथिंग। आपने एक फुल सेंटेंस को यूजर वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन सिस्टम, रिड्यूसिंग फेक पॉट एंड पोस्टेंसेस, पूरा का पूरा बोल्ड हो गया। सो वेयर डू आई गो फॉर अटेंशन? दैट इज वन। राइट हैंड साइड प्रोजेक्ट्स में आपने कैटेगराइजेशन को कट कर दिया डैश डाल के, अचीवमेंट्स का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट I can see the effort as a resume reviewer, but as soon as I look at it for 2 more seconds, मेरे को अगर ये इतने सारे ये mistakes दिखने लग जाएंगे, तो then for me I will not want to maybe spend so much time. I may not, but then you are risking yourself into putting yourself into the maybe category, और रिक्रूटर्स के पास आज के दिन में ये maybe category का टाइम नहीं रहता। Correct. That's the reality. You are in or you are out. Correct. Yeah. So anyway, we'll come back to student 5 later. Student 3 पे आते हैं. So student 3, your biotech department is actually your company, so it should be represented like that. यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट था बायोविजन डिपार्टमेंट ई मैगजीन, उसको आपने मेन एम्प्लॉयमेंट बना दिया, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं था। यू आर एसोसिएट एडिटर, सो यू कुड हैव रिटन एसोसिएट एडिटर, यस, बायोविजन डिपार्टमेंट ई मैगजीन, इसके नीचे बायोटेक डिपार्टमेंट। Agreed. That would have made sense. Then September 2022, August 2023 लिखने के बजाय अब यहाँ नोटिस करो, इस हाइफन के आगे में स्पेस है, पीछे स्पेस नहीं है। और अगर तुम अपने आप को एसोसिएट एडिटर बुला रहे हो और उसमें ऐसी मिस्टेक कर रहे हो, तो सॉरी बॉस, मैं आपको खड़े पांव रिजेक्ट कर दूंगा कि ना हो पाएगा। ठीक है, बिकॉज यू कैन नॉट बी एन एसोसिएट एडिटर एंड मेक सच मिस्टेक्स इन द वेरी फर्स्ट लाइन। ठीक है, इसके नीचे देखो, अभी ये जो हाइफन है और ये हाइफन है, ये मिसअलाइंड है, एंड इट्स एन आईसो राइट अवे। अब ये आपने कैसे बनाया, मुझे आइडिया नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू हैव यूज्ड कैनवा और सम अदर सॉफ्टवेयर, बिकॉज इस टाइप की मिस्टेक होती नहीं है अदरवाइज। भाई मैं एक चीज बताता हूँ, जितने भी टूल्स आ जाए दुनिया में, कोई यूज मत करो, गूगल डॉक यूज करो, उसमें बनाओ, कुछ भी मत और करो। वर्ड डॉक यूज कर लो अगर तुम्हें वर्ड डॉक यूज करना है, बट दोनों के अलावा कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, कोई भी कैनवा फैला, कुछ भी मत यूज करो। ठीक है, I will say do that till you have perfected this. Once you have perfected this, कि आप Google Docs में सब कुछ कर सकते हो, then don't even go to Canva and all. जो आपके एक AI resume बिल्डर्स होते हैं, जहां पर एक फॉर्मेट है ऑलरेडी बेसिस ATS, उसमें कॉपी पेस्ट करके आपको डालना है और फाइन ट्यून करना है। एंड कीवर्ड सर्च कितना अच्छा चल रहा है वगैरह, जैसे naukri.com पर आप चेक कर सकते हो कि रेज्यूमे अपलोड करके कि मेरा कीवर्ड परफॉर्मेंस क्या है, मेरा ATS स्कोर परफॉर्मेंस क्या है। यूज दीज, यूज टू गेट द स्कोर। आप ChatGPT में भी डाल के स्कोर पूछ सकते हो, मगर उससे
इतना एक्यूरेसी शायद ना मिले, क्योंकि ये फॉर्मेट चैट जीपीटी इतना वो समझ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। एक्चुअली इफ यू वांट मैं अभी करके देख सकता हूँ। डू यू वांट मी टू डू दैट? लेट्स ट्राई। ओके, Can copy paste the whole thing and put it there and say chat gpt give me ATS score. मैं एक्चुअली हाँ वही कर लेता हूँ, चलो। I was actually going to upload this entire file in code interpreter and then do it, but ठीक है, I'm just going to do it. But ठीक है, I'm just going to do it right now. जो देसी तरीके से करता हूँ. Below is the copy paste of a resume. This resume is in a single column view. The reason I'm mentioning this is because जब paste होगा तो समझ में आ जाएगा कि paste कैसे हुआ है इसको, ठीक है? New column view. So understand and read it as such. Give me ATS score for this. अब ATS score जो आता है ना वो हमेशा किसी जॉब के अगेंस्ट में आता है, ठीक है? I'm assuming you are again applying for a software engineer role. For this, I'll do one better. Give me ATS score for this resume for the following roles: software engineer, marketer, pre-sales, 4 ops, operations, 5 product manager. ठीक है? Take liberty in extrapolating the mentioned points and me the ATS matching scores after extrapolation. I hope you are able to take notes of how I am crafting this prompt, how descriptive you have to be, how specific you have to be, and so on. ठीक है, चलो पेस्ट कर दिया है, हाथ जोड़ो, उम्मीद करो कि सब सही आ जाए। Would ideally need a specific job description for each role. However, based on the general roles you have provided, I can extrapolate on the resume content and give you an approximate. See, this is the reason I said कि extrapolate करना, because ये content enough नहीं होगा. So relevant points: ATS score post 85%, high relevance due to the technical skills, projects and certifications. Great. Marketer 55%, क्योंकि content creation, engagement metrics, creativity awards मिले हैं, तो 55% match है. बाकी details हैं जो आप पढ़ लेना खुद से. Sales 45% है, moderate relevance with a focus on presentation and coordination skills. Operations 60%, experience with the magazine, soft skills, soft पे कर सकते हो. Product manager यूजर फ्रेंडली डिजाइन पे काम किया है, कार ट्रांसपोर्ट ऐप पे काम किया है, टेक्निकल स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स है, तो ये मिला के 65% कुछ दिख रहा है. सो अगर रेटिंग करनी है तो फर्स्ट चांस जो है आपका है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का है. एज ऑफ नाउ लुकिंग एट ऑल द स्टफ दैट यू हैव एडेड, ये क्या हुआ, ये सिंपली क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेजेस लिखे थे, वेब डेव लिखे थे, इसकी वजह से ये उसने इंटरप्रेट कर लिया, आपका स्कोर बढ़ गया, 85% हो गया. ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट मैनेजर, इसके बाद आता है ऑपरेशंस, इसके बाद आता है मार्केटर और इसके बाद आता है सेल्स. ठीक है, वो अब देख लो आपको क्या लगता है. ठीक है, Now I just add one very vital point here, Talvinder. Sorry. आपको ATS को एक्सट्रैपोलेट करके एक दिखा है ना, समझो SD सॉफ्टवेयर इंजीनियर का करना है. Now the resume reviewer may not even look at your resume even though relevance अगर high हो because of all the softwares mentioned. क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मेटिंग इतना हिला हुआ है. Correct. आपका इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर इतना हिला हुआ है. सिर्फ लिख के कि मेरे को ये टेक्निकल स्किल्स पता है, उससे आगे बात नहीं बढ़ती. ये इस्तेमाल करके क्या किया आपने, उससे फर्क पड़ता है. राइट? सो that is why in the first video Talvinder and me covered कि 5 प्रिंसिपल जो हैं, 5 प्रिंसिपल हाथ
हाथों हाथ चलते हैं। तो ये Right. जरूर याद रखिएगा। सॉरी, आई एम रीइटरेटिंग इट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Correct. मैं फुली विथ यू कि मतलब अगर आप हाथ में रखोगे ना, इसको लिख के रखोगे कि मुझे फॉर्मेटिंग ध्यान रखनी है, टाइपोग्राफी का ध्यान रखना है, आप मुझे, मैं इनफैक्ट वो उसको ले आता हूँ वापस। ये 5 पॉइंट्स थे: फॉर्मेट, कंटेंट, ग्रामर, टाइपोग्राफी, हायरार्की। ये आपको पांचों चीजों को रखना है। सारे रेज्यूमेस हैव टू क्लियर दीज 5 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप एसोसिएट एडिटर होके भी ये सब चीजें कर रहे हो, बहुत गड़बड़ है। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट्स थे मैं थोड़ा और लिख देता हूँ। अब ये पॉइंट्स को लिख के मैं लिखता हूँ यहाँ पे: बिलो इज द एक्सपीरियंस ऑफ द सेम स्टूडेंट assuming the student wants to become a product manager, because यहाँ पे कंटेंट की बात हो रही है तो प्रोडक्ट मैनेजर के जाने ज्यादा है। प्रोडक्ट मैनेजर, can you rewrite the points below as resume points so that the student has high chances of getting shortlisted as a PM? Feel free to extrapolate the points to make them quantitative and impactful. Let's see. Stakeholder collaboration, content optimization, leadership and ideation. ये 3 points आ गए and clearly detailed है, right? Better than what you have right now, right? This could have been, मैं थोड़ा सा और मेहनत करूंगा, इसको और improve कर सकता हूँ। पहले लेक्चर में यही किया था हमने। और कंसाइज भी कर सकते हो as you interact with ChatGPT. I want to add one thing. If you scroll down, Talvinder, on the resume, हाँ, यहाँ पर if you pause, है ना, नाउ ऊपर में, एकदम ऊपर में स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस डाला, फिर सडनली ब्रेक होके एजुकेशन आया, फिर सडनली हाँ, ब्रेक होके टेक्निकल स्किल्स आया, और वापस से प्रोजेक्ट्स में एक्सपीरियंस रेलेवेंट है जो किया है, हाँ, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है, यूआई यूएक्स फिग्मा इस्तेमाल किया है, रेलेवेंट है, मगर इतना वो डिस्कनेक्ट हो गया द सेक्शन correct, दैट, आई मीन ऑनेस्टली, माय रिकमेंडेशन टू द स्टूडेंट वुड बी either above and below या combined. These are both. आप कॉलेज के टाइम पर या स्कूल के टाइम पर, whenever it is, during your student years itself, you have essentially been an editor, done these personal projects, built something as a demo, etc., right? It's in those years. So you correct. can put it under one bracket, one heading, and put and list all of these out. Immediately वही करके जो रेज्यूमे रिव्यू करेगा ना, उसको लगेगा यार ये इसने काफी कुछ कर लिया, which is relevant. Correct. Fully with you. And my recommendation actually will be to push, or rather take this up. These Yeah, personal projects, agree. तो तुम्हारा जो एक्सपीरियंस, जो तुमने एक्सपीरियंस भी लिखा है ना, वो एक्चुअली पर्सनल वो प्रोजेक्ट्स ही है। Absolutely. तो इनको भी उसी के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, बट रादर एक्सपीरियंस डाला रखने दो, एंड उसके नीचे, बिकॉज वो तुम्हारे कॉलेज का एक्सपीरियंस है, तो उसको कॉलेज का एक्सपीरियंस के नीचे में 2 प्रोजेक्ट्स और है, उनको भी ऐड कर दो। एंड बिकॉज यहाँ तो डेमो भी है, यहाँ पे तो डेमो भी है, सो दैट मेक्स थिंग्स इवन बेटर। Absolutely. है ना? Again, but what you have written here is not so great. Yeah. Okay, car transport app in Figma, Coursera project network, I don't know what that is. February 2022. Please follow the same guidelines जो हमने पहले बताई। ड्यूरेशन हमेशा राइट साइड में रखो, राइट, क्योंकि एक्सपीरियंस की बात हो रही है यहाँ पे वेबसाइट। तो ये मैंने पहले ये क्लास में बताया था
the structure that you have to follow is this. ठीक है, company name या title of the job followed by job title, the brand name, company name या job title, brand name, और उसके नीचे project. अगर आप जैसे यहाँ पे किया है project, तो आपने क्या किया, अब लिखो web developer कॉमा विबग्योर 2023, नीचे लिखो टेक्नो कल्चरल फेस्ट वेबसाइट, उसके नीचे लिखो 1 line और 2 lines ऑफ समरी कि अ वेबसाइट फॉर टेक्नो कल्चरल फेस्टिवल्स फोकसिंग इवेंट शेड्यूल्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स. ठीक है, फिर उसके नीचे अपने पॉइंट्स लिखना शुरू करो. देन यू आर एस्टैब्लिशिंग क्लियरली व्हाट यू हैव डन. राइट नाउ इट्स ऑल ओवर द प्लेस. या एंड व्हेन यू से कार ट्रांसपोर्ट ऐप, आई हैव नो आइडिया व्हाट. तुम कार को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तुम कार में बैठ के ट्रांसपोर्ट हो रहे हो, क्या है? Description of what is it that has been built, project description. Yeah. And if you're thinking that यार कोर्सेरा का प्रोजेक्ट है, इसका कोई वैल्यू क्यों करेगा? बिल्कुल करेगा. Because as a recruiter I can tell you that मुझे बहुत स्टूडेंट्स पता है जो कोर्सेरा शुरू करते हैं, खत्म कभी नहीं करते. तो अगर तुमने प्रोजेक्ट खत्म किया है, I will value that. I'll value that a lot. तुमने खत्म किया, तुमने डेमो का लिंक डाला है, I am impressed. I would like to see कि तुमने फिग्मा में क्या किया है. बट इस तरह से लिखोगे तो कोई इज्जत नहीं करेगा. मैं ये चीज ना पहले भी रिपीट की थी, फिर से रिपीट करो. तुम अपने काम की इज्जत खुद से नहीं करोगे ना, तो दूसरे वाले से तो उम्मीद ही छोड़ दो. एंड व्हेन पीपल राइट लाइक दिस, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट यू आर नॉट वैल्यूइंग द वर्क दैट यू हैव डन. सो ये चाहे फिलॉसफी ले लो, चाहे जो ले लो, लेकिन यही हकीकत है, ये हमने देखा है. पीपल लाइक इंटरव्यू में लोग पहुंच के इंटरव्यू रेज्यूमे देकर, अब ये भी देखा है मैंने, रेज्यूमे बहुत शानो शौकत से कुछ चीज लिख दी, ये किया वो किया वगैरह वगैरह. जब रेज्यूमे के बेसिस पे इंटरव्यू बुला लिया, इंटरव्यू में पूछने लगे कि अच्छा इसमें बताओ क्या किया है. द चॉइस ऑफ वर्ड दे यूज फॉर दैट वर्क और the way they explain that work indicated to me two things. One, either they didn't do that work by themselves, or they don't value the work that they've done. Can you give an example, Talvinder? I know this is something that happens a lot, but would love to hear an example. So for example, let's say जैसे ये है विबग्योर वाला, ये सामने का एग्जांपल है. मैं अज्यूम कर लेते, चलो इस स्टूडेंट 3 को हमने इंटरव्यू को बुला लिया. I asked him, hey, this Vibgyor thing sounds very good. How big is the festival? Yes, sir, this is the big festival. It takes like 1,000, 2,000 people come in. That's a good website. It's a good festival. Okay, and you build the website by yourself? Yeah, I built the website and I had few friends with me. Okay. So can you tell me a little bit more about the technology behind it and what did you do to build this out? Sir, it was just a simple website. I was working on, I thought I'll build the website for the web festival. And I used my coding skills and UI UX. So I used a simple basic template and I made some changes to it. I added the content. The content was given to me by the festival team and I added it and I uploaded it on the server and I got it working. So you don't realize that perhaps you're being honest, but you're not realizing that you have demeaned your work so much by just saying this. And this is the most usual way I've heard of people describing their personal projects. Amar, would you be impressed if I say something like this? No, my question would very simply be that अगर आपने कुछ बनाया है तो आपका पैशन एकदम दिख नहीं रहा है, आपका जॉय एकदम दिख नहीं रहा है कि आपने कुछ बनाया है. तो इसमें या लाइक यू सेड, या तो दिमाग में रहता है कि इसने बनाया या नहीं बनाया, या फिर अगर बनाया तो आधा अधूरा मिसिंग इंफॉर्मेशन टाइप आंसर क्यों मिल रहा है मेरे. So it leaves a big question mark in my head both ways, right? Which then doesn't give me confidence that this person can take things forward for me. Okay, and I'll add few more points here. ये जो मैंने जैसे डिस्क्राइब किया ना, ये होता क्यों है? हम लोग क्यों डिस्क्राइब इस तरीके से करते हैं अपने ही काम को जिसपे हमने मेहनत किया है? आई एम श्योर कि तुमने हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता लगाया होगा, शायद ज्यादा लगाया होगा टू गेट दिस वेबसाइट अप.
राइट? लेकिन ऐसा हम लोग करते क्यों हैं? बिकॉज हमें सिखाया गया, हम लोग इंडिया से हैं, हमें सिखाया गया है टू स्टे हम्बल, टू स्टे ग्राउंडेड, हमें बताया गया है ना? और मतलब मार मार के सिखाया गया है कि स्टे हम्बल। Yep. एंड उस चक्कर में हम लोग हम्बल होने के चक्कर में हम लोग ये कर जाते हैं कि अपने काम की इज्जत नहीं करते। ठीक है, ये बोलना मेरे लिए आसान है, मेरे लिए भी करना मुश्किल है, लेकिन इतने साल हो चुके हैं तो अभी मार मार के सीख गया हूँ। लेकिन आई डू नॉट वांट द नेक्स्ट जनरेशन, योर जनरेशन, टू रिपीट द मिस्टेक्स दैट वी हैव डन। Resume is Totally, a place, totally agree. resume resume and interview is are two places where please do not be humble. You need to boast, you need to brag, and you should stop saying sorry if I am boasting. No, you have to boast. You have to say, yes, I built a website for the culture festival. The website was needed because we were inviting a lot of people from outside of the college as well, and for that we needed registration forms. Turned out that um, from the people who could have done, nobody was ready to do this website in the timeline that we had. We had to push out the website within 2 weeks, and everything was pending. So I took the mantle, I took the project up. Um, to do this, I employed 3 juniors to work alongside me. This shows your team thinking. I employed 3 juniors to work alongside me, and I directed them to build the website. I broke down the work across the 3 interns and myself. I picked up the harder things like server hosting, critical components like registration forms, ensuring that the registration forms are going to the database, and then it is also coming to the relevant teams in a way that they can export it out and they can use it for entry of the people. Because it's a techno cultural festival, so it's a little complicated UI UX, because while techno things require certain kind of typography, certain kind of font, certain kind of color choices, cultural festivals typically require different colors, different feeling altogether. So figuring the a UI, a UX that can merge these two techno-cultural ideas together was a little bit of a challenge for me. I relied on the theme of the Technoculture Festival, which was WebGear, to build out a WebGear or whatever it was, to build out the UI UX. The demo link is already there. I hope you have seen the link. Otherwise, I'll be happy to show you what I've done. I can go on and on, but now I'm describing the work with a lot of this thing कि मैंने बनाया है। जैसी भी वेबसाइट है, 5 पेज की है, 3 पेज की है, लेकिन मैंने बनाई है, और मैंने बनाई है, कोई और बना नहीं सकता मेरे कॉलेज में। तो भले मेरे कॉलेज में टॉपर हूँ, लेकिन हूँ। Absolutely. नहीं नहीं जो so the example you gave and the statement Talvinder made, everybody is यार very true कि हम दोनों ने 15 साल ये गिर गिर के सीखा है कि अपना जो काम किया है, and it is a cultural thing, right? If you have the chance and you on YouTube you can check other, there are mock interviews that happen with people in the US or in Europe. There are YouTube channels, you can check that. They don't do this, right? Because the culture is different. Correct. But somewhere when you are in an interview scenario, अगर आप अपने आप को पोजीशन नहीं करोगे ना कि मैं ही हूं ये रोल के लिए सही बंदा या बंदी, और आपको मुझे लेना पड़ेगा ताकि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो मैं सॉल्व करूं, Correct. तो वो आगे नहीं बढ़ेगी बात. एंड दिस स्टार्ट्स विद योर रेज्यूमे इटसेल्फ. ओके. Correct. I have been guilty of the same thing, right? Me too. And most of us have, over who are in our generation, let's call it, right? Then there has been a generation where there have been people who have just written anything and everything, कहीं से कुछ fancy words बना के लिख दिया, डाल दिया, latest technology terms डाल दिया, और इंटरव्यू में आके उनको कुछ पता नहीं कि क्या भाई जवाब क्या दूं. टू एक्सट्रीम्स देखे आप. Correct. आपके पास चांस है आज के दिन with the AI tools that are there, with the online communities that are there, to build your resume which is in the middle, which is truthful yet boasts about yourself,
to do mock interviews. You can make ChatGPT into a mock interview thing, right? Correct. This is the role, ye JD hai. I want you to ask me a question and I'm going to type out or voice note the answer to you. Give me feedback, vagera, vagera. Correct. Use it. But don't lose out. I think both of us are trying to say that. Don't lose out. Please focus on this, and you need to practice your interview so that देखो एक कॉन्फिडेंस होता है और एक एरोगेंस होता है, ठीक है? आपको कॉन्फिडेंट रहना है, एरोगेंट नहीं बनना है कि मैं हूँ और तो कोई है नहीं, वो भी किसी को पसंद नहीं है। वो टाइम था, बीच में एक फेज आया था जो कि लोग उन वैसे लोग को भी हायर कर रहे थे, बिकॉज उन्हें लगता है कि इतना एरोगेंट है तो इतना कॉन्फिडेंट इतना कर देगा। लेकिन दैट even if that person is smart, even if that person is talented, that person is going to spoil the entire team culture so badly that you would not want to have a toxic person like that in the team. So you do not want to showcase your cockiness or your arrogance. Nobody wants that. Okay, you have to be confident. You have to be confident कि मैं capable हूँ. There's a good chance you may not have done the things that the person is asking you to do, but you are confident कि given a chance, given an opportunity, I am smart enough to figure it out and solve it. Yes. That is what every recruiter wants to see. क्या तुम प्रॉब्लम सॉल्वर हो? क्या तुम अननोन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? क्या तुम रिसोर्सफुल हो? क्या तुम रिसोर्सफुल मतलब जुगाड़ू हो? राइट राइट एंड तुम्हारे में एक इननेट क्यूरियोसिटी है, ठीक है? एंड फाइनली वर्क एथिक। मैंने तुम्हें काम बोला, मेरे बिना किसी फॉलोअप के तुमने काम कर दिया, बस ये 5 चीजें अगर हैं, तुम अगर थोड़े 21-19 भी हो ना तो भी हायर हो जाओगे, versus somebody who is excellent at, let's say, technology skills, technical skills, but lacks the other things, will not get hired. So that's a very valid point, and I know we are digressing a little bit, but it's a very, very valid point, Talvinder, that, and I'm seeing that in a lot of people I speak to in the interviews they go through, right? कि जो एक टेक्निकल पार्ट है वो तो बात होती है, मगर बहुत स्ट्रेस अब जा रहा है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। करेक्ट। कि आप, क्योंकि लोग समझते हैं कि आज के फास्ट पेस वर्ल्ड में अगर एक बेसिक से बंदे के पास या बंदी के पास फाउंडेशंस हैं वो सीख लेंगे, मगर अगर वो बेसिक्स नहीं और एक बेसिक वो क्यूरियोसिटी लर्निंग नहीं है तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग सो क्विकली टुडे that you have to constantly keep learning. Exactly. You have to constantly learn and you have, इसी कारण वो जनता recruiter जो आपसे वो चीजें expect कर रहे हैं. They're not expecting you to be like, कि आप fresher हो, कॉलेज से निकले नहीं कि हमारे लिए इतने complicated सॉफ्टवेयर बना के दोगे, नहीं. लेकिन अगर वर्क एथिक है, बाकी चीजें हैं जो मैंने 5 चीजें बताई, अगर वो सब हैं, then I can trust you with my software, I can trust you with my work. Yeah. Okay. So please fix this resume from here. Certification etc. आपने लिखा हुआ है, ये इस तरीके से मत डालो यार, कैसे डाला वो आपने? ऐसे मत डालो हर जगह पे प्लीज। अगस्त पूरा टाइटल पूरा मत यूज करो, 3 कैरेक्टर यूज करो, APR, MAY, AUG, DEC, APR, JUL, ये यूज करो और कुछ मत यूज करो। I think basically resume में ना main apart from other things I think कहीं पर हाँ भाई कुछ सॉफ्टवेयर कुछ इस्तेमाल किया है जहां से ये फॉर्मेट बन के PDF हो गया है, जो मुझे लगता है सोर्स में ही प्रॉब्लम है। हाँ, सोर्स में प्रॉब्लम, PDF का इशू नहीं, सोर्स में प्रॉब्लम है। हाँ, सोर्स में प्रॉब्लम है। एंड whoever द स्टूडेंट इज, यार काम किया है आपने, मेरे को बिट्स एंड पीसेस में हम 1 घंटा बैठ के देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि काम किया है, कैसे लिखना है वगैरह वो एक पार्ट है, मगर आपने जैसे पोजीशन किया है, सेक्शन बनाए हैं कुछ, इट गेट्स लॉस्ट। ऐसे मत करो, बिकॉज यू हैव द बेस, शो दैट। Absolutely, yes. I mean, yeah, I mean, you have the base, you can do a lot better, but you have not invested yourself, the energies in the right direction. Please fix it.
हायरार्की फिक्स करो, एक्सपीरियंस डालो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस, तो पहले एक्सपीरियंस दिखाओ, ये एक्सपीरियंस है, ये प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, देन पोजीशन रिस्पांसिबिलिटी है, इनको सीक्वेंस पे डालो, सही तरह से डालो, you will be doing far better. And please you should watch the previous 2 videos because उसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं जो अभी हमें रिपीट नहीं कर रहे हैं। Yep. ठीक है, अदरवाइज वी वुड हैव डन द सेम थिंग। टेक्निकल स्किल्स को मैंने चैट जीपीटी डाल के मैं डिस्क्राइब करता कि चैट हाँ जी। जैसे यहाँ पे किया भी था हमने, राइट? एक्चुअली आई Yeah. कैन जस्ट स्क्रॉल अप एंड आई कैन शो यू। ये रहा, जैसे देख सकते हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी मैंने किस तरीके से रीराइट किया था। सिमिलरली ये देखिए, ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था किसी और स्टूडेंट का, उसको कैसे डिस्क्राइब किया था हमने। देन सिमिलरली सर ये प्रोजेक्ट तो सेम ही था, एक हमने ये भी किया था ना, टेक्निकल स्किल्स को डिस्क्राइब किया था कहीं और पे। ये वाला वेदर हब वेदर हब, यस, लुक एट दिस, क्लियर ब्रेकडाउन, टेक्निकल स्किल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल्स वगैरह वगैरह। दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, you can do the same thing using the prompts that I had written in the previous one. ठीक है? Yep. Okay. I By think the way, let's look at the other resumes briefly. In the interest of time, we'll briefly touch upon them. And most of the principles जो videos में हमने cover कर लिए हैं, वो same रहते हैं, वो बदलते नहीं हैं। जैसे correct. ये वाला अगर आप देखोगे, I 2 like, pages. हाँ, तो वो 2 पेजेस का तो 1 पेज करो। आपने 2 पेज क्यों हुआ है वो सीधा मैं बिना पढ़े आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दिए हैं। आपकी रोल की जो भी थे सबसे सप्लाई एसोसिएट, आपकी Yeah. रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है या आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था वो डाल दिया आपने। आपने अचीवमेंट्स आपने क्या किया या आपने एक्चुअल वर्क करके क्या क्रिएट किया, वो मिसिंग है। Correct. राइट। और पास्ट टेंस नहीं इस्तेमाल करके करंट, ये प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करके वो भी एक And I think, इट गेट्स sorry, लॉस्ट। Amar, या yeah, and I think whatever format that you have used, उसमें पंगा है, whatever software you have used, उसमें कुछ पंगा है, because you can see, and ये by the way, ये क्यों important है, because ATS को भी दिक्कत होगी इसको स्कैन करने में। यस। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो, जैसे मैं यहाँ से ऊपर कॉपी करने जाता हूँ, ये इट स्टार्ट्स फ्लिपिंग, यप। इट इज फ्लिपिंग, which means आपने कुछ तो यूज किया है जो कि अटक गया है, which is not covering, which is means जब प्रोग्रामेटिकली भी स्कैन होगा तो भी दिक्कत आएगी। वेरी राइट, वेरी राइट। ठीक है, इसमें वन थिंग आई विल से कि ऊपर वाला, इफ वी गो टू द टॉप, तलविंदर, द समरी, हाँ एक सेकंड, या तो वेरी वेरी गुड दैट यू हैव रिटन अ समरी, माने ऑब्जेक्टिव समरी, ओवरव्यू, जो भी बोलना है ऊपर वाला जो है पीस, मगर इतना लंबा कोई नहीं पढ़ेगा। करेक्ट, Supply chain managers are pivotal players in the logistic planning process. They help companies identify. Nobody wants to know all of this. करेक्ट। आप Candidates नोटिस करो, should be, जब मैं यहाँ सॉरी कॉपी पेस्ट भी कर रहा हूँ ना, आपको दिख जा रहा है यहाँ भी दिक्कत, ये यहाँ देखो ब्रेक हो रहा कितने ब्रेक्स हो रहे हैं यहाँ पे। है। कुछ तो गड़बड़ की है आपने, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया ऐसा भाई जिसने ऐसा कचरा मचाया है। राइट, ये आपके इंडिविजुअल पॉइंट्स हो गए, असेस, कीप, बिल्ड, रीड आपने इसी के अंदर घुसा दिया था, मैनेज वेंडर्स यहाँ से आ गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट रिपोजिटरी, कुछ तो प्लीज यार, माय रिकमेंडेशन इज टू यूज गूगल डॉक्स, इट वर्क्स वेरी वेल, और वर्ड डॉक, बट देन वर्ड डॉक मैंने देखा है, मैं द रीजन आई स्टार्ट recommending Google Doc over Word Doc is because the chances of you making mistake in Google Doc is much lower. Totally agree. वर्ड डॉक में इतनी मिस्टेक हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने मिस्टेक कर दी है। गूगल डॉक में मिस्टेक करने के चांसेस बहुत कम है, इसी कारण मैं रेकमेंड करता हूँ गूगल डॉक यूज करो, क्योंकि इतनी सिंपल फॉर्मेटिंग चाहिए एक्चुअली, मुझे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेटिंग चाहिए ही नहीं रेज्यूमे में, तो मत करो। बहुत ही बैंग ऑन आपने बोला तलविंदर। देखो, वर्ड डॉक में कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, जैसे गूगल डॉक में वो थोड़ा लिमिटेशन है, मगर रेज्यूमे के लिए चाहिए नहीं। जितना क्लीन, क्लियर, सिंपल आप रखोगे उतना अच्छा।
करेक्ट। कैन यू रीराइट, अब मैं इसको डालता हूँ, देखो सप्लाई एसोसिएट के नीचे में एक लाइन है, उसके नीचे एक और एक्स्ट्रा लाइन जो कि डबल लाइन है मिसअलाइंड है, सब में। जो जो मिसअलाइंड है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर वाला नहीं है। जो वर्ड डॉक देता है ना खुद से डबल लाइन, वो नहीं यूज किया हम्म है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लाइन डाली गई है। हम्म और अनफॉर्चुनेटली वो लाइन भी ना थोड़ी टेढ़ी है, फिर नोटिस थोड़ा सा टिल्टेड है। टिल्टेड है, शुरू कहीं हो रहा है एंड कहीं हो रहा है, इट इज है यहाँ पर सोर्स में बहुत कुछ, सोर्स टॉक में कोई इशू है। कुछ तो झोल है, मेजर झोल है। ओके, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा कंजूसी दिखाऊंगा इन राइटिंग द फुल प्रॉम्प्ट। आई जस्ट राइट, गो थ्रू द resume पॉइंट्स बिलो, rewrite it by making it concise, no, not too concise, by making it quantitative, impactful, and with action verbs. Let's see. मैं थोड़ी कंजूसी कर रहा हूँ। पिछले अगर आप गुड वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में लिखे हुए प्रॉम्प्ट्स, तो यूज एनी वन ऑफ देम। ओके, while लॉजिस्टिक्स while ओवरसाइट। ChatGPT gives this, I just understood जो ऊपर में ओवरव्यू सेक्शन स्टूडेंट 4 आपने लिखा है, ये ओवरव्यू नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, कुछ नहीं है, ये आपने सप्लाई चेन मैनेजर कौन होता है, कोई टेक्स्ट बुक आंसर जो है वो है विकिपीडिया या जो भी, दैट इज नॉट रेलेवेंट। नॉट श्योर व्हाई यू पुट इट, बट इट इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट। ओह शिट, हाँ, अगर मैंने मैंने नोटिस कर लिया ना तो फिर मैं खड़े पांव रिजेक्ट कर दूंगा। आई नॉट इवन केयर अबाउट के लिप स्पेस के हो कहाँ के हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रिजेक्ट कर दूंगा कि भैया चीटिंग तो मत ही करो तुम। मैंने नोटिस नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं वो ऊपर वाला, मैं सीधा इसमें आ गया था। इट्स जस्ट कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजर कौन है, दैट्स नॉट नीडेड। आपको क्या करना है सप्लाई चेन में वो लिखो, करेक्ट, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। करेक्ट। अब नीचे देखो पॉइंट्स कैसे निकल के आए, लॉजिस्टिक्स ओवरसाइट, रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपर्टीज, वेंडर मैनेजमेंट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और अच्छे से नीचे अंदर में बढ़िया पॉइंट्स आ गए। ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज, एंड दिस इज लाइक बेसिस जस्ट दिस छोटू सा प्रॉम्प्ट दैट आई गिव, राइट। अगर और लंबा अच्छा सा पॉइंट दिया होता तो और भी बेटर हो जाता, अगर मैं जेडी के साथ देता तो और भी बेटर हो जाता। या या ठीक है, सो प्लीज फिक्स, यू हैव सम पोटेंशियल, बिकॉज आपने काम कर रखा है, यू हैव सम पोटेंशियल, बट अगर इस तरीके से लिखोगे तो कोई इज्जत नहीं देगा आपको। ठीक है, यहाँ देखो स्पेस देखो, फॉर्मेटिंग, ये बुलेट पॉइंट्स बाहर जा रहे हैं, ये बुलेट पॉइंट्स अंदर हैं। मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, डिजायर्ड स्किल्स कहाँ से आ गया। ये आपने कोई जेडी का कॉपी पेस्ट करके डाला हुआ है इंस्टेड ऑफ योर ओन, या तो आपने क्या किया है, जेडी को ही लेके चैट जीपीटी लेके रेज्यूमे पुराना वर्जन लेके डाल दिया और वो मर्ज हो गया, या क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा, बिकॉज इट हैज एलिमेंट्स यहाँ ऑफ अ पे जेडी खतरनाक से एंड अ रेज्यूमे। हाँ, ये क्या है, ये कहाँ से आ गया? एंड नोटिस दिस, इट इज नॉट कॉपिंग प्रॉपरली। अगर ढंग से फॉर्मेट किया होता है ना, दिस आर ऑल साइंस ऑफ ए गुड फॉर्मेटिंग, बाय द वे, गुड फॉर्मेटिंग, गुड थिंग। एंड ये इसलिए क्रिटिकल है बिकॉज एटीएस भैया स्कैन करेगा और वो ये सब पढ़ नहीं वो पाएगा, पढ़ समझेगा। नहीं पाएगा। हाँ, वो समझ नहीं पाएगा, पता नहीं क्या हो रहा है। ऊपर से अब नीचे देखो, ये देखो आप नीचे में, एक तो पहले ये देखो एजुकेशन, इसको आपने कैपिटल मोटा मोटा कर दिया है, नीचे डिजायर्ड स्किल्स डाल दी हैं, इसका कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा मुझे। और जो पर्सनल स्किल्स डाली हैं और उसके नीचे जो बुलेट पॉइंट है वो अलग ही कहानी है, ये एरो आ गए हैं, ऊपर में ये डॉट्स थे जो कि अलग ही अलाइन थे। ऐसे फॉर्मेटिंग एरर मत करो, अगर आपका लिखा भी होता है ना ढंग से, ये रिजेक्ट हो जाते हैं आप। So, क्योंकि Talvinder, if you can हर scroll up. हर किसी को चाहिए अटेंशन, अटेंशन टू डिटेल वाला बंदा, इस तरह Yeah. काम वाला बंदा किसी को नहीं चाहिए। Just also one thing, and ये मैं बहुत देखता हूँ, especially people who've never built resumes before, आपको declaration लिखने की कोई जरूरत नहीं होती रेज्यूमे, हाँ, जो एक एंड में काफी लोग डालते हैं, डेट डालते हैं, सिग्नेचर, ये वो, you don't need to do that, right? करेक्ट। Not in a resume. That is something which is some declarations and all are much later once you've gone through the interview process and everything.
करेक्ट करेक्ट आई नो कि ये एक फॉर्मेट है जो काफी सर्कुलेट होता है, 5-6 साल पहले बहुत पॉपुलर था, डिक्लेरेशन भी करेक्ट नीचे आ जाता था वगैरह. इट इज एब्सोल्युटली नॉट नीडेड. एग्रीड इट इज नॉट नीडेड डू नॉट स्ट्रेस अबाउट इट नॉट वरी अबाउट इट इट्स नॉट नीडेड या ठीक है लेट्स सो गो टू द प्लीज नेक्स्ट. जो भी हाँ आप जो भी हो प्लीज थोड़ा फोकस करके इसको इम्प्रूव करो या you have some experience under your belt you can या do wonders या but you need to definitely fix these things okay So I think one thing which we've not touched in the earlier videos, which we've touched here, is there is a difference between responsibility and achievement, right? yes So जो एक second principle जो था हमारा out of the 5 principles for resumes, content करके, देखो yeah content आपका सारा कुछ होगा, आपके responsibilities होंगे, आपके achievements होंगे, आप सब कुछ उसमें डालो, that is your overall content. right फिर आप रेज्यूमे में सिर्फ जो अचीवमेंट बेस्ड, इम्पैक्ट बेस्ड, एक्शन बेस्ड वर्ब्स इस्तेमाल करके जो है, जो इम्पोर्टेंट है और रेलेवेंट है वो जॉब के लिए, आप वो डालेंगे, है ना. जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का और अचीवमेंट का ये डिफरेंशिएशन प्लीज थोड़ा समझिए. इफ यू वुड लाइक अस टू कवर मोर इन डिटेल अबाउट दैट, we can do another session later someday. Put it in the yeah comments and we're happy to help you out on that. absolutely absolutely so for now I think we can take a pause for Yeah. this class and we will connect again in the next class to cover student 5 6 and 7 let's see how much we cover in each class but we like I said we are just being a little slow with this entire class because we just want to ensure that we are covering all the points that are needed ये बार बार इस टाइप के सेशंस होते नहीं, इतने डिटेल्ड रिज्यूमे रिव्यूज नहीं होते हैं. बहुत हाई लेवल करके मैं बता सकता था आपको 5 मिनट के अंदर, लेकिन आपको नहीं फायदा होता है ना. सो होपफुली कुछ सीखने को मिला. प्लीज यूज कमेंट सेक्शन टू ऐड योर रेज्यूमेस और एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू डिस्कस. हमने डिटेल में बातें की हैं कि what makes a resume good, what makes a resume bad, and we have even got into very tactical things कि prompt कैसे लिखा जाएगा जिससे कि आपका resume improve हो सकता है, आपके resume points improve हो सकते हैं, किस point को कैसे hierarchy में डालना होता है, and so on. बहुत सारी बातें की हैं. My recommendation is कि fast forward नहीं, speed up करके 1.5x करके 2x करके सब देख लेना. सिर्फ अपने resume को या फिर आपसे मिलते जुलते रेज्यूमे को मत देखो, सब कुछ देख लो बिकॉज हमने बहुत सारी बातें की हैं कवर और ये आपको लाइफ में एक बार ही करना होता है. रेज्यूमे अच्छा रेज्यूमे बनाना कैसे बनाते हैं वो आपको एक बार ही फिगर आउट करना है और अगर इन घंटों में अगर आपने फिगर आउट नहीं किया तो आई डाउट आप फिगर आउट कर पाओगे. ठीक है तो ये जितना हमने कवर किया है दिस इज मोर देन इनफ कंबाइंड विद व्हाटएवर अमर हैज टेकन अर्लियर इन हिज क्लासेस ऑन हाउ टू यूज ChatGPT फॉर रेज्यूमे इंप्रूवमेंट. ठीक है इसके बियॉन्ड आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. हैविंग सेड दैट लेट्स डीप डाइव. अमर Yep. गो अहेड. तो ये वाला हम लेते हैं. सो इन वन ऑफ द अर्लियर सेशंस थोड़ा इस पर टच किया था हमने, मगर थोड़ा डिटेल में जाते हैं. तो इसमें जैसे couple of points that we had mentioned that time, मैं briefly पहले mention कर लेता हूँ so that एक connection हो जाए. तो for example हमारा एक recommendation generally रहता है कि single column format is best. Dual column format problem हो जाती है for multiple reasons, but the main reason you have to keep in mind is जो ATS जो होते हैं, not all ATS is very advanced to read 2 columns, right? And सारा content जो 2 column में होता है उसको अलग से segregate करके समझने में वगैरह वगैरह. तो single column format हम usually suggest करते हैं. अब let's take कि अभी 2 column format है ये वाले student का, ये वाले resume में. तो इसमें few important things which I'll mention the good things. It is good that experience is mentioned right on top left quadrant, top left पर, ठीक है? Right. उसके नीचे में technical skills आ गए, top right पर education आ गया, उसके नीचे projects आ गए, उसके नीचे achievements आ गए.
तो इसको मैं, इफ इट वाज मी, और अगर मैं एक रेज्यूमे रिव्यूअर के तरफ से भी देखूं, तो थोड़े ये सेक्शंस इंटरचेंज होने चाहिए. एक्सपीरियंस जहां पर है वो सही है, अचीवमेंट्स एक्सपीरियंस के नीचे आ जाना चाहिए. राइट. अज्यूमिंग की प्रोजेक्ट्स में भी काफी कंटेंट है. अचीवमेंट की स्पेलिंग गलत है. स्पेलिंग एब्सोल्युटली राइट, अचीवमेंट्स का स्पेलिंग गलत है. हम्म, यहाँ पर द स्टूडेंट ने ब्लू और ब्लैक का इस्तेमाल किया कलर में. अब I would honestly not suggest you do this unless there is a standard or pattern to which you are using these colors. Okay. So for example, if you decide on a 2-color resume, then maybe your job title needs to be in a different color, or the company name can be in a different color, right? That is the maximum. And usually what I usually do is company name in a different color, बिकॉज कंपनी नेम के साथ में हाइपर लिंक करके उनके वेबसाइट पर ले जाता हूँ. करेक्ट. दैट्स द वे आई हैव यूजुअली बिल्ट इट. और हाइपर लिंक करने से ऑटोमेटिकली गूगल डॉक कलर बदल देता है. राइट. सो कीप दिस इन माइंड. अब एक्सपीरियंस हुआ, उसके नीचे अचीवमेंट्स आ जाना चाहिए. एंड आई थिंक ऑनेस्टली आप जो इतना इलैबोरेट कर रहे हो टेक्निकल स्किल्स का, कोर्स वर्क सब्जेक्ट्स का, कोडिंग प्रोफाइल्स का, choose. You have all the projects. This resume has just become very crowded, right? Correct. So Correct. honestly, I know that this person has done a lot. Okay, great. But I have literally, first I have 10 seconds, maybe 5 seconds to decide whether I want to read this resume or not. And initially मैं सोचता हूँ ठीक है मैं पढ़ लूँ. मगर I start reading, I have max 30 seconds more. I cannot consume this in 30 seconds. Not possible. Correct. Right? Also, you are missing the very important thing on top, which is objective. That is what initially grabs the attention. आपने इतना सारा काम किया, fantastic that you've done, all this work, and as a machine learning intern, as a software engineering intern, आपने सब जगह impact लिखा है, which is fabulous. बहुत ही अच्छा काम किया आपने की. एक्शन वर्ब्स इस्तेमाल किए, आपने इम्पैक्ट इस्तेमाल किया, मगर इम्पैक्ट से मतलब क्वांटिटेटिव टर्म्स हमने डाले. यस एब्सोल्युटली. जैसे पहला वाला, implemented AWS infrastructure for 10 plus clients, resulting in 50% decrease in server downtime and 30% increase in site speed and performance. Right? This is, as a statement, fabulous. Right? The problem that I will have when I start reading this is you've put so many things in bold. What is it that is of actual importance for me to focus on? Correct. The other thing we spoke about in one of the earlier videos, brainovision. You've kept that in capital. We did a Google search क्योंकि आपने hyperlink नहीं किया. अब brainovision करके multiple companies हैं, smart bridge करके multiple companies हैं, right? तो ये important हो जाता है. आपका जो डेसिकना करके जो हम सोच रहे थे, some fancy European French name or something, is देसी Q&A, I'm assuming, right? कनेक्शन नहीं बना. ये ब्रेनोविजन देखिए आप, ब्रेनोविजन में 2 कंपनीज है, .org, .in भी है. कौन सी कंपनी बात कर रहे हो हमें नहीं पता. Yep. So you have to understand that how you position different pieces of information, how much you give the user. मन तो होता है यार भाई जितना काम किया है मैंने मैं डाल. Like I think what is good about this resume is the person is not shy. The person is happily boasting कि मैंने मचा दिया है. मैंने मचा दिया, पढ़ो बैठ के. हाँ, मगर भाई आप कितना पढ़ोगे? प्रोजेक्ट्स में माई फिटनेस जिम में I am not going to read 7 lines in, I'm assuming this is less than 10 font size, right? Correct. Which is a cardinal sin. Yeah.
सो बहुत ज्यादा, मतलब इसमें ना बहुत वो है, घिचपिच बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा यार। ठीक है, मजेदार, आपने अपना सीएससी किया है, बीएड बीटेक सीएससी एआई एंड डीएस में, बहुत ही अच्छा, 8.6 सीजीपीए, फैंटास्टिक, वेरी गुड, एंड यू डन अ लॉट ऑफ वर्क। आई हैव नो आइडिया वेयर सॉरी, टू गो। छोटा सा एक और चीज, ये कुकटापल्ली मेरे ख्याल से नहीं है, वो कुकटपल्ली है, जितना मुझे हैदराबाद की ज्योग्राफी पता है। बिल्कुल कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि ये कुकटपल्ली है, कुकटापल्ली कुछ नहीं है। कुकटपली, यू राइट, कुकटपली है, कुकटा नहीं है। एग्जैक्टली राइट, या कुकटपल्ली है। कुकटपली। तो ये दो जगह आपकी मिस्टेक समझ में आई है कि आपका स्पेलिंग में ना थोड़ा सा पैदल है। इंपॉर्टेंट जगह पे आपने कुकटपल्ली को कुकटापल्ली कर दिया, अचीवमेंट्स को। अचीवमेंट्स को स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हाँ, और भी होंगी शायद, हमने ध्यान नहीं दिया अभी। राइट। सो बट स्टिल आई थिंक एक मैं जो बोलूंगा कि स्टिल सी, कंपेयर टू द अदर resumes that we have at hand, yours is actually far better than them. ठीक है, in from the get go, in terms of the points, the content that you written. So जो हम लोग 5 पॉइंट्स बताए थे ना रेज्यूमे की, जो 5 पॉइंट, सॉरी, जो 5 चीजों को मैंने बोला था हाँ जी, कि फॉर्मेट, कंटेंट, ग्रामर, ग्रामर, टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी, हायरार्की, एफर्मेशन। हायरार्की। सो कंटेंट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ठीक है, यू हैव मेंशन, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब एट कंटेंट। ग्रामर, yes, you have done a good job, it's written very well, but छोटी मोटी आपने टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स काफी कर रखी हैं, इन टर्म्स ऑफ फॉन्ट साइजेस, इन टर्म्स ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल, इम्प्लीमेंटेड का आई छोटा है यहाँ पे, करेक्ट। ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की मिस्टेक आपने बहुत सारी कर और रखी है, जरा कंपनी का केयरलेसनेस। सडनली सी बड़ा हो गया है, सेंटिमेंट का। एंड हाँ, ग्रामर में एक चीज ये याद रखिए कि पार्ट ऑफ ग्रामर इज नॉट टू मेक एंडलेस सेंटेंसेस, ओ यस, हाउ टू कीप इट कंसाइज। आपके करेक्ट, सारे बुलेट पॉइंट्स 3 3 लाइंस के हैं, उधर आपके एक्सपीरियंस में, एंड दे आर नॉन स्टॉप। और अगर मैं आपका प्रोजेक्ट्स भी देखूं, या नॉन स्टॉप, 6 लाइंस करेक्ट। नॉन स्टॉप। So that is a grammar thing that you have to be very careful of. हाँ, इतना लंबी लंबी कहानियां मत लिखो, मतलब आपके अलावा किसी को और इंटरेस्ट है नहीं इन राइटिंग एवरीथिंग दैट यू हैव डन। ठीक है, मैं अपने रेज्यूमे पढ़ता हूँ ना, 4 साल 8 साल पुराने, मतलब भाई क्या सोच रहा था मैं, इतना क्यों लिख रहा था। किसी को इंटरेस्ट नहीं है। So you have to just write the most impactful things that can just get you in. That's it. Like वो बोलते हैं ना, And वो relevant. एलिवेटर पिच, हाँ, and एलिवेटर पिच है ना। करेक्ट, एलिवेटर पिच होना चाहिए, वैसा ही सोचो। रेज्यूमे दिखाया, हाँ ठीक लग रहा है, आ जाओ हाँ, बात करते हैं। हाँ। और फिर बात करते टाइम जो आपको एक्सप्लेन करना है आप एक्सप्लेन करो। मतलब द आई थिंक द माय एक्सप्लेनेशन इन जनरल व्हेन इट कम्स टू रेज्यूमे इज, थिंक ऑफ दिस एज कि देखो सर, मैंने ये उखाड़ा, ये उखाड़ा, ये उखाड़ा है, हम्म, कैसे उखाड़ा जानने के लिए मुझे बुला लो। हम्म। ठीक है, सो थिंक ऑफ इट लाइक दैट कि तुम्हारा इंटरव्यू जो है वो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है कि मैंने कैसे, हाउ डिड आई अचीव द थिंग्स दैट I'm mentioning that I've achieved, है ना। इस तरीके से So, सोचोगे, you'll be right, able to structure it better. absolutely. So if you come to technical skills, another suggestion that I have learned, if you can scroll down, Yes, yes, this one. right? Good structure here also, by the way. Yeah, But everything should not be bold. exactly, right. हाँ, Thora, pick and choose what you want to make bold in this resume, right? I like the structure. Coursework subjects जो आपका है ना, I don't think it's needed here. If there are certain skills, such as problem solving skills that you are saying, or systems architecture, which is a skill, or systems design, which is a skill, right, then create a skill section for that. This coursework subject does not help put that point across, right? agreed. If you have courseworks you've done, like you've written, solved 500 plus problems in Geeks for Geeks, आपका अगर एक repository है GitHub में कहीं पर वगैरह वगैरह, make a portfolio. And इस पर एक छोटा, I'll give you a note, and
I never thought of this. यूजुअली पोर्टफोलियो मेरे दिमाग में चलता था फॉर वेरी लॉन्ग, यार एक वेबसाइट पर होना चाहिए ये वो वगैरह, या मीडियम पर ब्लॉग्स लिखो. I've Correct. come across these fantastic simple Notion documents which are portfolios. नोशन, अरे मैंने गूगल डॉक्स पे देखा है, गूगल डॉक पे बना के लोगों रखा है, गूगल स्लाइड पे बना के रख दिया है. So what matters is how well you have structured these items and you have put together in a simple slides. Correct. सिंपल, जैसे ये जो आपने जो बनाया है, ये 3 चीजें डाली हैं, माय फिटनेस जिम. इमेजिन का गूगल स्लाइड है जिसमें कि माय पोर्टफोलियो फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड माय फिटनेस जिम, ठीक है, जिसमें रिएक्ट जेएस वगैरह डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड. ये बगल में एक बड़ी सी इमेज, आप क्लिक ऑन दैट, इट ओपन्स दैट माय फिटनेस जिम का लिंक, राइट? बस दैट्स ऑल. इफ यू क्रिएट वन टेम्पलेट, उसमें सारी इंफॉर्मेशन डाल दो, इट बिकम्स अ पोर्टफोलियो. जहां लिंक करना लिंक करते रहो. और अगर आप, और इस पर आप, एक बहुत ही फैबुलस पॉइंट है कि आजकल व्हेन यू आर अप्लाइंग ऑनलाइन, राइट, हाँ, मेजॉरिटिवली सब पूछते हैं आपका पोर्टफोलियो लिंक, गिटहब लिंक, Correct. पोर्टफोलियो लिंक. लिंक्डइन तो है ही, बट गिटहब और पोर्टफोलियो पूछते हैं लोग कि अगर आपके पास है तो दीजिए. दैट मेक्स यू स्टैंड आउट. So for you, this student who has built this, all of this, you have so much amazing content. आपको create a portfolio out of this instead of dumping everything on the resume. And let Correct. people resume पर bang, यार मैंने ना इतने metrics move किए हैं, अगर और मैंने और उसके ऊपर इतने projects भी कर लिए, इतना कुछ ये सब भी कर लिया, उसके लिए यहाँ पर जाइए. And top section में जहाँ पर आपका name, फोटो, लिंक्डइन, ईमेल, वहां पर एक लिंक डाल दीजिए माय पोर्टफोलियो करके. करेक्ट. एंड लेट पीपल एक्सप्लोर, राइट. दैट आल्सो शोज द पर्सन, जो रिक्रूटर है, कि दिस पर्सन हैज डन मोर देन जस्ट टिपिकल जो डे टू डे जॉब में है, उसने उससे ऊपर काफी कर लिया. ग्रोथ माइंडसेट दिख रहा है बंदे का, which is a great thing for anybody to like. मतलब this is the overall great job. The chances of you getting shortlisted even with this resume is high, because जो mistakes है, जो छोटी मोटी mistakes हमने point out की है, ये इग्नोर कर दिया जाएगा, because जो बाकी resumes है वो इस level के नहीं है, ठीक है. However, if you are applying to a big company, yeah, then ignore नहीं होगा. Everybody is going to give top notch resumes. फिर ये कहीं थोड़ा sideline हो जाए, right? Assuming you've worked on AWS as a this thing, assuming that कि आपका एक vision है यार AIDS में आपको कभी ना कभी तो एक बड़े कंपनी में आपको करना है, assuming whether it's a salary point or learning point or whatever it be, then you have to build your resume accordingly. Absolutely yes. And आपको exactly, मतलब ये just because competition is not right now, जो आपके resumes दिख रहे हैं वो इस level के नहीं है, doesn't mean that you can be complacent. ठीक है, ये resume ATS scanning में दिक्कत आएगी because of the 2 column view. So single column में डालो, इनको simplify करो, थोड़ा बहुत ये जो changes बताए हैं वो changes करो, and you will be able to stand out and you will do well. और छोटे छोटे fixes, given my impression of the kind of person you are, I believe you always look for or seek improving yourself. Yeah, you seem to be somebody like that who is concerned about improving yourself for your own sake. So please fix these things, ठीक है. And ये इतने सारे blue links मत डालो. आगे आपको links add करना ही है तो इसके आगे link आप add कर सकते हो just as a link, ठीक है. I would prefer, I'll tell you the reason why, because believe it or not, a lot of people still look at resumes in a printed format, ठीक है. If this is the thing, right? So 2 things. One, अगर ये मुझे black and white में मिलता है resume for whatever reason, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे लिंक क्लिक भी करना है, right? क्योंकि आप कलर पे डिपेंड कर रहे हो. इसके बजाय अगर क्लियरली दिख रहा है, लिंक है, अंडरलाइंड है, ब्लैक है, अंडरलाइंड है, मुझे समझ में आ गया इस पे लिंक है. fantastic. Fantastic, right? Yeah, absolutely, bang on. So that's something that I typically recommend कि resume black and white, resume and logo black and white में काम करने चाहिए.
exactly the way it should be accessible, जिसको बोलते हैं accessible होना चाहिए even when it is in black and white. ठीक है, आपके केस में मुझे माई फिटनेस जिम पे क्लिक करके लिंक, मतलब बिकॉज इट्स ब्लू मुझे पता है, अदरवाइज मुझे नहीं पता चलेगा, है ना? So that is where also, you know, यही जो हम थोड़ी देर पहले भी बोल रहे थे कि I think there's a lot, like even, you know, whether you've somebody who's an intern still, who's just starting and who's done so much work, right? Or somebody who has 5 years, 10 years, 15 years experience, to choose what to put where Correct. is by itself a skill, right? Which you have to develop and learn. So your projects, if instead of these blue links, if you, because you don't know, right? कोई print करके पढ़ रहा है, वो क्लिक तो उसमें एस्पेक्ट नहीं आता ना, मगर अगर वो ऊपर में देखेगा यार इसका पोर्टफोलियो भी अलग है, so then that hiring manager who's looking at a printout will say, tell the recruiter or HR कि I want the actual link, I want to view it, or if it's a presentation or something, give me a printout of all of that, right? Correct. So keep these things in mind as you build and fine tune this, but yes, quite a good job compared to what others have done. So this is in general a good resume, very well done, good effort. I'm not sure where you did it and how you did it, but I'm very impressed. Good job. Let's talk about the next person. So you have a big benchmark, you know, high benchmark to fill. There is an objective here. As a motivated learner, I'm eager to work with dynamic team that fosters some culture. So यहाँ पे ना मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा. अच्छा यार, छोटी छोटी मिस्टेक्स मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगती है. जब सब अच्छा शुरू किया था, यहाँ पे बीच में स्पेस क्यों खा गए? ठीक है, मेरा जनरल रिकमेंडेशन है कि जब आप ऑब्जेक्टिव डालते हो ना, प्लीज थोड़ा सा यूनिक डाला करो, थोड़ा अपने दिल का डाला करो. अब अपने दिल का डालने के लिए, जैसे अगर मुझे इसको अपने हिसाब से लिखना है ना, मैं जरा चैट जीपीटी का फायदा उठाता हूँ. below is the objective written in a resume by a fresher. I believe the objective is too generic and lacks personality. I would like to see bold claims and key highlights of their career, of their resume mentioned in the objective, along with the direction, specific direction, along with the specific direction मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, objective along with the specific goals that the student seeks in his career, his or her career. This student wants to be a software engineer. Let's rewrite this objective and make it impactful. Let's see. If I was doing it for myself, because I know who I am, I would have given more details about how I would like to be perceived. This is direct. As a passionate software engineer, because ये software engineer मैंने बोला था, with a proven track record in Dash, I'm determined to drive innovation in tech-driven environments. I thrive in teams that champion cutting-edge solutions and collaborative ideation, eager to harness my technical expertise and so and so. Again, because यहाँ पे एक specific company के लिए नहीं लिख रहे हो आप, तो generally लिख सकते हो eager to harness my technical expertise
in ABC technologies. I aim to develop groundbreaking software applications and contribute to blah blah blah. अब ये बहुत ही generic लिखा गया because मैंने उसको कोई specific चीजें बोली नहीं है. But similarly, you could have written things like, I aspire to be a great React engineer or great ABC engineer. I aspire to be, to work on challenging problems in the field of ABC, right? So you can, the more you describe it here, your personality type as well as the kind of things that you want to do, you will end up getting a better resume or better objective out of it. An objective is a great place to also stuff the right keywords. So अगर आपको keywords डालने हैं, डलवाने हैं, यहीं डलवा. ठीक है? This is great. ये in fact मैं बोलूँगा एक second. Above student is also first rank holder in a reputed college. Use this in the objective. See, I like this. That is the first thing that I'm going to read, and I would love to notice that. Yeah. Anyway, overall, the font size is very small. It is very hard to read. It is not scannable. It is hard to read. I like the formatting though. It is still clean. Okay. Everything is in the right place. The consistency of the spacing everywhere is good. I just want to point out one thing, and this happens when you usually do a PDF, right? Google Doc हो, Microsoft Word हो, जो भी हो, sometimes आपको एक error दिखाता है ना underline करके color में. जैसे आपका BSc के नीचे वो underline आ रहा है. अगर आप उसको resolve नहीं करोगे और PDF मार दोगे तो वो color भी आ जाता है. Right? So, and then when it goes to the reviewer, it gets noticed because it's a different color. No reason. It's not a big thing. It's not a big issue, right? But just be careful of these things, especially because we move from Google Docs, Microsoft Word, PDF, etc. ये हो जाता है. So this is some just clear up in one place before moving to the next. Correct. Dhruv Global School. Okay. 79 के पहले spacing. हाँ, the spacing is missing here. ये थोड़ा सा गड़बड़ है. And you can save थोड़ा सा space here by actually combining these few things into a single table. अगर टेबल बनाने तो जगह थोड़ी बच जाएगी आपको, तो जो आपने इतना फॉन्ट को इतना सा बना दिया है ना, वो करने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी टू फिट इनटू वन सिंगल पेज. तो आपको जगह थोड़ी नहीं कहीं और से बटोरनी पड़ेगी, वो यही जगह है. ठीक है. एक ये जगह है. दूसरा ये जो 1 2 3 4 5 इनको आप ब्रेक डाउन कर दो, 2 इधर एंड 3 इधर या इधर 2 इधर. राइट. इफ यू ब्रेक दिस डाउन इनटू 2 pieces, that will also work very well, because you'll end up getting some space which you can then use to expand this size. See, project experience के नीचे में ना, you do not have to write college project and Pune India as such. You can kill one line, project experience bracket में college project लिख सकते हो और Pune India ऊपर कर सकते हो. So then you save one line and you get more space again for writing more stuff. ठीक है. Design and implemented a system with create a college project for menu browsing. So this is the same thing, no? This line, this point, created a college project. नहीं तो ये तो छोटा है ना, एक सेकंड को.
ये देखो, created a college project for menu browsing, ये तो पहला पॉइंट होना चाहिए था. And seamless food ordering along with distinct login panel for user as well as admin. Modern technologies to enhance the ordering process. ठीक है, understood. But I think this could have been done better. But yeah, I like that. I can see because this is well formatted, I can be able to copy this without any breaks. पिछले एक वीडियो में we were trying to copy the resume points and they were breaking apart because formatting वगैरह में issues थे. और यही issue होता है ATS में. आपका resume at least ATS तो अच्छे से पढ़ लेगा. Below points are below resume points. Talk about an online food ordering project made for a college project. Need to improve them by making them. Need to improve them by introducing structured approach. Structured नहीं है because sequence सही नहीं है. And highlighting the key technical challenges that were solved while building this project. I'm not explicitly asking it to be quantitative because it's a college project, so I'm not sure if this was used for actual food ordering of any kind. System architecture and design, user experience, dual login systems, or I could have also used authentication, role-based access control or something. I would have liked to introduce that. Technology integration, outcome, customer service reducing order time by so and so, provide the canteen staff with efficient order management tools, blah blah blah. And dual login system की जगह I would have used role-based access control. That would have been a little better term. But this is like immediately it is better than what you have written. थोड़ा सा और मेहनत करोगे, थोड़ा सा और improve करोगे, you will get a much better resume points here, right? Same thing here, social distancing with object detention method. I think इसका तो बहुत अच्छे से निकल के आना चाहिए. Let me see. I'm curious now. Improve the resume points below. This is me being absolutely lazy now. Okay, let's see. Improve the resume points below. Highlight technical expertise and achievements. The student wants to become a software engineer. Let's see. Right. Let me add one more thing. Rewrite the resume points by extrapolating the points and including important information that may have been missed. For example, the kind of models used, the stack used, the architecture used, training data, etc. So what I'm talking about here is that in this, because we're talking about AI-based computer vision, etc., there would have been a lot more technical depth in this project than what it seems like. So which is why I'm asking to add more stuff. So now you can see stuff. Talvinder, what are the big differences? I know one, keywords will get picked up better by ATS. Correct.
right? And by the resume reviewer also कि भाई keywords ये वाले दिख रहे हैं मेरे को, तो automatically what else? How does it help? So it helps in, first of all, by ensuring that you're adding as many points as needed, especially highlighting a technical expertise and proficiency. You're showing the depth that you have. As a fresher, that's exactly where you can edge out the others. यहाँ पे when you said utilize AI based computer vision, such a Right. high level idea, that is Right. something that anybody can write. कोई भी लिख सकता है. Correct. आपने actually क्या किया था? कुछ नहीं, AWS का मैंने एक मॉडल यूज कर लिया था. That's it. कुछ आता पता नहीं कैसे काम करता है. Versus now look at this. Adopted a CNN architecture and harness the power of the YOLO model for real-time object detection. Utilized TensorFlow and OpenCV. Now I know that you're talking, you know what you're talking about. Right. Because अगर मैं resume में claim कर रहा हूँ कि मैंने ये सब किया है, तो मुझे पता है कि मुझे इंटरव्यू पूछा जाएगा और मुझे पता है तो मैं बात कर सकता हूँ. Absolutely fair. I think the other thing is, like in with the social distancing and with the social networking, जो second और third वाले हैं, second वाले में तो हमारा we have impact points, right? The first one and the third one, there's no metrics mentioned as such, and sometimes it's possible that especially freshers से जब बात होती है या somebody who has 1 or 2 years experience, वो बोलते हैं कि यार I don't have metrics per se that I have necessarily moved, right? मेरे को एक काम दिया गया था, वो मैंने काम complete किया. तो ऐसे situations में what is it that the student or the person building the resume can write which shows कि मैंने कुछ तो company में move किया? कैसे लिखा जाए? Absolutely. You're asking me this question? Yes. So, okay. So the answer to this question is there's no single fit here. Let me use this notepad to write it down. Okay. So there are few scenarios here. Okay. Question is how to write impact points in resume. Okay. Let's consider the scenarios. Scenario 1. You know the resume point. You know the impact points. Okay. You're working in a company. The company has told you you are doing an internship, you're doing a project, and your company told you that ये अपने जो काम किया है इसकी वजह से इतने लोग आ गए, इतने लोग साइन अप कर चुके हैं. Great, use it. ठीक है. कंपनी नहीं बता रही है, लेकिन आपका प्रोडक्ट डिप्लॉय हुआ था, प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुआ था. आप पूछ सकते हो भाई सर क्या फर्क पड़ा, इससे क्या असर हुआ. पूछो, आपको पूछना पड़ेगा. बट पूछने का मतलब ये नहीं कि आप क्रिटिक कर रहे हो. आप पोलाइटली पूछ सकते हो कि सर आई वुड लव टू मेंशन दिस प्रोजेक्ट, this internship project in my resume. Are there any impact numbers that I can mention? You can give me a ballpark. I don't need accurate numbers. That's it. That's all you need. Okay. Perfect. Second, scenario 2. You do not know. So you know the resume impact points because you deployed the project or you worked somewhere and your work got published. ठीक है. क्या कर सकते हो यहाँ पे? Number 1. Find out using analytics if you have access to it. Otherwise, find out from your manager by politely मुझे सोच रहा क्या जमाना आ गया, मुझे लिखना पड़ता है आजकल. by politely asking for the impact numbers, and you can mention that you need it for your resume. And ballpark is also good. And ballpark is also okay. Ballpark का मतलब होता है rough estimated number. ठीक है. Scenario number 2, you do not know the impact.
ठीक है, क्यों? बिकॉज योर प्रोजेक्ट वॉज नॉट डिप्लॉयड, आपने खुद के लिए बनाया कुछ, और योर प्रोजेक्ट वॉज नॉट पब्लिश्ड एट योर इंटर्नशिप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ 2006 में जब मैंने इंटर्नशिप की थी, 7 में की, वन ऑफ द याद नहीं, internship की थी. I was in Pune and I was working at this fun company, very technical, hardcore technical company in Pune. I don't know उन लोगों ने मेरे को कैसे सेलेक्ट कर लिया था because as an aerospace engineer, maybe वो शक्ल देख के कुछ मंगा लिया. Actually मेरा जो साथ में लड़का था, जो my friend who was, वो हर ग्रुप में होता है ना एक बंदा जो कि फोकस करता है, तो he got us the internship. So anyway, we went there and very technical, extremely technical company. They were involved in product lifecycle management, PLM, for aircraft products, and heavy duty CFD का काम होता था, computational fluid dynamics और CAD 3D CATIA करके सॉफ्टवेयर आता है, वो सब कुछ था. तो एक्सट्रीमली, तो उस टाइम में हमें पता नहीं था कि हम लोग ऑटोमेशन का काम कर रहे हैं. हमने ऑटोमेशन काम किया था कि 3D सॉफ्टवेयर का कुछ फाइल से हमें कन्वर्ट करके एक्सेल में कुछ तो काम करना था. एनीवे, तो इतना ट्रॉमा अभी तक है, सोचो 20 साल पुरानी बात भी याद है. सो खैर, अब उसमें फॉर एग्जांपल मुझे कोई आइडिया नहीं है. इफ आई हैव टू, समबडी आस्क्स मी कि उस इंटर्नशिप में तुम्हारा इम्पैक्ट क्या था, I don't know, because there was a client and I was not interfacing the client. Client was the company managers interfacing with the client, and I was just given a task that, hey, this is the file, this is the project, do it. And I had to figure it out how to do it. Right? That's it. And there's a good chance you, like just me, like me, exactly same कहानी हो गया आपके साथ. आपको नहीं पता कि impact क्या हुआ है. Right. So if, और यही कहानी थी, right? You do not know the impact. Your project was not deployed, or your project was not published at your internship, or no one told you. अब क्या करोगे? मैं अपना एग्जांपल लेके बता सकता हूँ. मेरे केस में मैंने क्या किया था, जब बताया कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का काम था, विच रफली ट्रांसलेट्स टू कि कुछ ऑटोमेशन करना था. दैट इज वन. नंबर 2, ऑटोमेशन करना था मतलब कि एक फाइल थी, और 3D फाइल सोच लो, 3D कॉम्प्लिकेटेड 3D फाइल है, उसमें से हमें एक्सट्रैक्ट करने थे कुछ की पॉइंट्स, कुछ की डेटा निकाल के हमें एक्सेल में कन्वर्ट करना था, एक्सेल में पब्लिश करना था. एंड देन इसके बाद वो एक्सेल फाइल को के अंदर ऑटोमेशन रन, VBA लिखना था, विजुअल बेसिक की लैंग्वेज लिखनी थी. Right. VBA लिखना था ताकि उसमें से हम लोग दूसरा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का कन्वर्ट कर सकें. Okay. तो ऐसा कुछ काम था. हमें बना तो दिया, लॉन्च भी कर दिया. बाद में पता भी चल गया कि इसका पैसा कितना मिले कंपनी को. और हमें रियलाइज हुआ कि हमें तो हम तो बंधुआ मजदूर हैं. कुछ पैसे नहीं मिले हमें compared to the company, what company was getting paid for. But anyway, if I have to translate that into some impact number, what I can write here is build an automation script to convert file formats of ABC. मुझे सॉफ्टवेयर याद नहीं है, आई थिंक कैटिया ही था, लेकिन ABC of ABC software to reduce the time required or the efficiency, दोनों लिख देता हूँ, time required of conversion from, it used to typically take about 3 days 4 days. ठीक है, 3-4 working days, right? So अगर 4 दिन ले लेता हूँ और 8 घंटे का टाइम लेता हूँ मैं, तो कितने हो गए? 32 घंटे. 32. From 32 hours to 1 minute. 1 minute भी नहीं, 30 seconds होंगे वो. Sounds good, right? This is something that I know of, and I am 100% sure कि ये होता है. मैनुअली करने जाओगे 4 दिन लगेंगे, मेरे सॉफ्टवेयर थ्रू जाओगे 1 मिनट लगेगा. So what you basically did is you extrapolated this information, keeping in mind ki what were the parameters of the project that you had, right? Correct. You took on the project, आपको पता था कि देखो 4 दिन लगते हैं, आपका एक KPI दिया गया है कि इसको आपको 1 मिनट में करना है,
और ये आपने बिल्ड मुझे करके। नहीं, मुझे 1 मिनट बोला नहीं गया था, सॉरी, नहीं ये करेक्ट कर रहा हूँ। मुझे बोला नहीं गया था कि 1 मिनट में करना है, मुझे ये बोला गया था कि ये एक फाइल फॉर्मेट है, ये फाइल फॉर्मेट को हमें इस फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और हमें और एक एक्सेल फाइल भी प्रोड्यूस करनी है, बिकॉज उसके अंदर एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो कहीं और भी यूज होगा। ठीक है, अब ये कन्वर्जन का, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि इसके अगेंस्ट में कंपनी का क्या फायदा हुआ, तो मैं इतना तो कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो मैं एटलीस्ट ये तो लिख सकता हूँ जो मुझे पता है, राइट। टिपिकली जो इम्पैक्ट होता है वो क्या ही होता है, वो एफिशिएंसी की इंप्रूवमेंट्स होती हैं, पैसे बचा लेते हो किसी के, राइट। एफिशिएंसी होती है, इफेक्टिवनेस होती है, कन्वर्जन होता है, सब कुछ घूम फिर के ना एफिशिएंसी और पैसे बचाने की बारी आती है, और कुछ नहीं होता है। कन्वर्जन भी एफिशिएंसी है ना, आपने एफिशिएंसी इंप्रूव कर दी किसी फनल की, राइट। तो घूम फिर के एफिशिएंसी को किसी ना किसी एंगल से बात कर सकते हो आप। अगर मुझे कंपनी को पता होता तो कंपनी को मैं बोलता, एंड आई सेव्ड एक्स मिलियन डॉलर्स ऑफ दैट कंपनी बाय डूइंग दिस वर्क, मैंने वो लिखा होता, लेकिन मुझे वो पता नहीं है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर ऑटोमेशन बिल्ड किया तो क्या ही इंप्रूव किया होगा, टाइम एफिशिएंसी इंप्रूव की होगी, करेक्ट। तो ये फ्रॉम 32 आवर्स टू 1 मिनट कर दिया। अब मुझे एक्चुअल नंबर्स याद नहीं है, बट हमने ऐसे कुछ बनाया था अपने रेज्यूमे पॉइंट। तो सिमिलरली there will always be something that you have done which is uniquely yours, which has some impact of some type. थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा on how to do it. Let me just do it for this guy, for example. ये क्या है, पहला वाला ले लेते हैं, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग। इसका एक्चुअली इसने कर दिया ना, ओपन एआई, इसने चैट जीपीटी ने कर दिया यहाँ पे ना, यहाँ था ना, ये रिड्यूसिंग ऑर्डर टाइम बाय 25% एंड रिड्यूसिंग प्रोसेसिंग एरर्स बाय 15%, ये कर दिया है। इसको नहीं करता हूँ मैं, टच नहीं करता हूँ, सोशल नेटवर्किंग में टच करता हूँ। ठीक है, ओके, आई एम अज्यूमिंग दैट द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट आपने जो बनाई है वो लॉन्च भी किया आपने, क्योंकि इसमें दिख रहा है यूजर रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल कस्टमाइजेशन, मैसेजिंग, सर्च एंड न्यूज़फीड फंक्शनैलिटी। ओके, अब दो सिचुएशन है, या तो किसी ने यूज नहीं किया आपकी वेबसाइट, आपने बनाया, आपने खुद के लिए बनाया और आप खुश हो गए कि मैंने बनाया, चल रही है वेबसाइट, करेक्ट। नोबडी इज यूजिंग। द हार्डेस्ट वे कि अब मैं इसमें इम्पैक्ट क्या लिखूं, किस चीज का इम्पैक्ट लिखूं। ठीक है, जस्ट लाइक आई सेड, आपके इम्पैक्ट एक्सटर्नल हो सकते हैं और इंटरनल हो सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल केसेस में you could have written something like, oh, and 10,000 students started using it in 1 week, which shows the effectiveness via external validation. What do you think can be internal validation here? आपके बनाने का internal validation क्या हो सकता है? So you're asking? Yeah, I'm just like asking you to brainstorm. What do you think? I have few answers. But... Right. I mean, so an internal validation can essentially be that assuming that it's gone live, right? तो आपने से फॉर एग्जांपल यूजर रजिस्ट्रेशन की फीचर बिल्ड किया, अगर पहले लेट्स अज्यूम कि कुछ था ही नहीं, तो पहले तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, कहीं मैन्युअली, कहीं एक्सेल बन के कहीं शायद अपलोड हो रहा था, मे बी दैट वाज द प्रोसेस, राइट? सो यू आर एसेंशियली, इफ 100 records were getting captured earlier, because this is a digital process, you have increased the number of user registrations by 2x, 100 to 200, right? For a same time frame, on a daily basis. For example, right. That could be one internal validation, right? आपके पास डेटा तो easily available होगा इसका, right? Correct. News feed functionality, अगर समझो आपके पास था, आपने इसको थोड़ा improve किया, this is a second kind of scenario. Where the news feed earlier, maybe you can even talk about bugs, right? The news feed would constantly need to, okay, in technical terms, pagination करके जो concept होता है कि हर बार 5 न्यूज के बाद, फीड के बाद वापस से रिफ्रेश करके फिर नेक्स्ट 5 आएंगे, और उसका फिर एक बफरिंग टाइम हो जाता है, right? So maybe you reduce buffering time from 10 seconds down to 1 second for every pagination. So there are these internal things that you can instantly, while building, you know कि ये change हो. Correct. So you can talk about these things. You can further talk about, for example, social networking website with this level. अच्छा, आपने WordPress यूज करके बनाया, WordPress के अंदर में बहुत सारे इश्यूज आते हैं when it comes to building such websites. ठीक है,
I'm not sure how did you do it. If you use any existing template and a theme, then not so impressive. Then it just tells me that okay, you can build something, but you have not understood the technicalities of it. But let's say you have used WordPress only as a templating engine of sorts and not beyond that. The rest everything is built from scratch because आपने ऊपर लिखा है from scratch. So I'm taking your word for it. Few of the internal validations or internal, when I say internal validations that you can introduce or internal impact points with the comment. You can write as the speed at which you develop. ठीक है? So for example, you can say collaborate with a team member to create a social networking website from scratch, from first line of code to deployment in 1 week flat. Okay, yeah. That sounds impressive. Yeah. वो आपने किया नहीं, आपने सितंबर में शुरू किया, दिसंबर तक चलाया था. अच्छा, एक चीज और, अगर दिसंबर DEC है, अक्टूबर OCT है, तो सितंबर SEPT क्यों है? उसको भी SEP रखो, standard रखो. Okay, so one, you can talk about speed at which you deployed or developed. That is one. Second is bugs reported. ठीक है, कितना bug free था वो? Third, internal validation or internal impact point could be, you can talk about आपने कुछ तो टेस्टिंग की होगी, कुछ तो यूजर्स को दिया होगा, right? So you can talk about number of posts received in X time. In X time. Next, you can talk about अगर वो भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कोई यूजर ही नहीं आया इसके ऊपर, कोई बात नहीं. You can talk about, just like Amar said, any of the technical challenge which is otherwise fairly challenging. Latency कितनी कम रखी है आपने? मैसेजिंग की बात करो, मैसेजिंग में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बफरिंग के, कैशे के, बहुत सारे इश्यूज आते हैं. यू कैन टॉक अबाउट एनी वन ऑफ देम. आपने सर्च की टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की, ठीक है? बफरिंग, एनी ऑफ दीज थिंग्स व्हिच आर अदरवाइज टेक्निकली चैलेंजिंग, बफरिंग, लेटेंसी, कैशे, एक्सेट्रा. ठीक है? यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट sorry, there was this one sentence that I had in mind, which completely skipping my mind. You can talk about, if you did, and I'll suggest you should do it, load testing. Just load tested on ABC number of users. मेरे users तो नहीं आए, लेकिन load test करके रखा है, ये infrastructure जो मैंने build किया है, this can handle 10,000 users simultaneously. ठीक है? लोड टेस्टिंग कर रखी थी मैंने. दिस इज अनदर वे टू डू इट, अनदर वे टू वैलिडेट कि जो मैंने बनाया वो अच्छा बनाया. ठीक है? सो यू कैन फाइंड सच इंटरनल नंबर्स व्हिच आर इंपैक्टफुल एंड यू आर लेटिंग you're letting the recruiter ask you questions that can further establish how good you are. Absolutely. Yeah. उसको टॉकिंग पॉइंट दे रहे हो आप. ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग में, सोशल नेटवर्किंग में, इन सब में आप टॉकिंग पॉइंट दे रहे हो. सेकंड वाले में तो टॉकिंग पॉइंट्स मुझे मेरे पास हैं ऑलरेडी, मुझे क्या क्या पूछना है उनसे. लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड वाला जिस तरह से आपने लिखा है वो इतना कॉमन है ना, इतनी कॉमन प्लेस चीज है कि मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना इम्पैक्टफुल क्या ही हो सकता है. बिकॉज आपने लिखा है कि वर्डप्रेस बनाया, तो मुझे कुछ ऐसे ही समझ. आई एम ऑलरेडी अंडर द इंप्रेशन दैट यू आर यूजिंग सम एग्जिस्टिंग टूल और टेम्पलेट और थीम एंड दैट्स ऑल दैट यू हैव डन. If that's actually what you have done, I'll recommend remove it and जो first दोनों है ना उनको enlarge कर लो. Because वो dilute कर रहा है. Right. बाकी कामों को dilute कर रहा है, उसको हटा दो. अगर आपने WordPress यूज किया लेकिन बाकी सब कुछ आपका स्क्रैच से, आपने कोई थीम नहीं यूज किया, कुछ भी यूज नहीं किया, then please ensure that it comes across that way in this. Right now it is not. ठीक है? Okay. Leadership experience, which is class representative and president, women empowerment cell, student volunteer representative. ठीक है? You do not need to. The spacing is just थोड़ा सा irritating for me because इसके नीचे की spacing भी ज़्यादा है
तो जितनी स्पेसिंग नीचे की उतनी स्पेसिंग ऊपर की है, वो नहीं होनी चाहिए, दोनों पास पास में होने चाहिए कंपैरेटिवली। सिंहगढ़ कॉलेज ऊपर लिखा है आपने, फिर देन ये भी लिखा है, नीचे स्पेस बहुत ज्यादा है थोड़ा, आई थिंक वो थोड़ा सा इरिटेटिंग है मुझे, बट अदरवाइज ग्रेट कंटेंट, सॉरी नॉट ग्रेट कंटेंट बट Great गुड formatting. कंटेंट, हाँ Mhm. गुड फॉर्म, गुड कंटेंट, great formatting, although font sizes etc should be better. The number of typographical mistakes were very very less compared to all the other resumes, so good job at that. You definitely have a lot of potential and can do wonders. I would love to, you know, if you are looking for a job, let us know. Okay, I think we're coming to an end in Yeah, this session. So we will continue on this with the last resume for today. Or do you want to cover it right now? I think let's cover it because we did touch upon this resume briefly as well. Yeah. Right. See, So do not use any of these templates which जिसमें के left sidebar है. Strict no no. मतलब देख के जो मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जिसका रेज्यूमे इस फॉर्मेट में आता है मैं उसी वक्त रिजेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है कि बंदे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ढंग से रेज्यूमे बनाने का, कोई एग्जिस्टिंग आपने कोई टेम्पलेट उठाया होगा उसे उसको लगा दिया है. और डोंट डू इसमें दैट. मैं आपको ये भी बता दूंगा, योर नौकरीज वगैरह जो पैकेज डील्स मिलते हैं, जो मैंने आप पहले भी बोला था, वो बोलते हैं कि ये वाला फॉर्मेट चलता है, एटीएस अप्रूव्ड है वगैरह वगैरह. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्लीज डोंट. या Like I actually went back and strongly fought with them that I don't want to call them such formats. Give me very nice clean format. This was years ago, करेक्ट where I said, let me try out whether experts in resume building can help me build my resume. Then finally I said, करेक्ट ठीक है रहने दो, मैं खुद बना लेता हूँ. कीवर्ड्स का उन्होंने लिस्ट दे दिया, मैं अपना ही बना लिया. करेक्ट. So absolutely not, right? Do not do this thing. You don't need, I'm assuming that's a photo which we've redacted, right? Not needed. You're using so much space. This is again somewhere आपने ये कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है, हाँ. क्योंकि ये ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बीबीएमएस कहीं पूरा राइट में शिफ्ट हुआ पड़ा है. एवरीवेयर यू विल सी इट्स लाइक शिफ्टेड, लाइक टैब करके एक होता है ना, टैब करके स्पेसिंग किया हुआ है, वो भी सेम लाइन में नहीं है. वो भी एक अलग बात है. वो है, फिर ये देखो ना, ये देखो यहाँ पे स्टोर के बाद कॉमा है, कॉमा के आगे स्पेस हाँ, है, यहाँ पे स्पेस दे दिया है, वो भी डबल स्पेस दे दिया है, इधर का उधर जुगाड़ करा दिया है. और ये वो है ना, जस्टिफाइड है, लेफ्ट एंड राइट जस्टिफाइड है, वो दोनों नहीं, जस्टिफाइड नहीं चाहिए अपने को, लेफ्ट अलाइन चाहिए. ठीक है. और यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद स्पेस नहीं है, और यहाँ स्पेस ही स्पेस है, and स्पेस ही basics स्पेस such है. as HTML is not a H capital TML small, right? हाँ, ये CSS. पूरा बड़ा होना चाहिए ना, तो प्लीज यार ऐसे पाप मत करो, अच्छे पाप करो, है ना. अच्छे आपने पाप मतलब जैसे कि projects, I mean very interesting projects, huh, by the way, हाँ, Talvinder. I mean करेक्ट. like BBMS is like a really cool if you're looking at healthcare, which is up and coming today, right? बोथ द Temperature प्रोजेक्ट्स आर monitoring. गुड. ये भी, हाँ ये This is भी also इंटरेस्टिंग है. very interesting, right? Healthcare is such a big thing in today's world. तो आपके पास आपने जो 2 प्रोजेक्ट किए हैं ना, ये प्रोजेक्ट के बेसिस पर ही आपको इंटरव्यू कहीं मिल सकता है. मगर अगर इसमें से अगर मेरे इज्जत को से लिखो तो. कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपने काम क्या किया है, आपने इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया है, राइट? So much that we've covered earlier, and Talvinder is giving you an example on ChatGPT. Using this, use that content to actually focus your resume in a single column format, to show people ki, yeah, I've done some really, really cool things, yeah, and this is what I've built here. And let's see what ChatGPT comes back with, right? सिस्टम आर्किटेक्चर, बैकएंड डेवलपमेंट किया, जो भी आपने यूज किया, फ्रंट Right. एंड डेवलपमेंट किया, डेटाबेस मैनेजमेंट किया है. Yep. अभी तो मैंने बहुत ही लेजी सा क्विक सा क्वेश्चन Yep. पूछ दिया.
अगर आप थोड़ा डिटेल में डालोगे तो और भी बेटर निकल के आएगा। और भी निकल आएगा। ठीक है, सेम अगर चीज आपने इसके लिए। प्रोजेक्ट्स किए होंगे तो गिट का तो आपके पास होगा रिपोजिटरी, यू कैन पुट दैट लिंक एज वेल। अच्छा, एक चीज और, सॉरी, एक चीज और, आई डोंट सी, अच्छा सो ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, और इतनी जगह मत लो। आई थिंक आपने बिकॉज आपने सॉफ्टवेयर यूज किया है तो जगह नहीं, तो उसमें ऑप्शंस नहीं होंगे ना ऐड करने के लिए, तो आपने कर दिया। ऐसे मत करो। यू हैव शोन अ लॉट ऑफ अदर रेज्यूमेस, प्लीज रेफर देम एंड इम्प्रूव योर रेज्यूमे। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब पहले कॉलेज जो आपका लेटेस्ट एजुकेशन है वो आएगा, उसके बाद नीचे आएगा। योर वर्क फ्रॉम योर स्टडी एट एम कुमारासामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। चेक करते हैं कहाँ पर है ये। करूर, करूर। ओके, सो तमिलनाडु। Tamil Nadu. Okay. So definitely mention your location and the college का location, etc. ठीक है? Do mention that very clearly. Co-curricular activities में I'm very surprised slash excited to see that you are talking about paper presentation. Right? अगर आपने actually participate किया, आपका paper actually publish हुआ है या present किया आपने कहीं पे, that's a great thing. That's a big thing. That's a big thing. उसके बारे में उसको को करिकुलर एक्टिविटीज में डालो, उसको रादर प्रोजेक्ट की तरह डालो। मैंने एक पेपर प्रेजेंटेशन किया ऑन सो एंड सो प्रोजेक्ट, देन टॉक अबाउट इट। ठीक है? अच्छा, ये इंजीनियरिंग के पास स्पेस होगा, एंड के बाद स्पेस होगा, सब जगह पे। ये वो काफी जगह में वो गैप्स हैं आपके मशीन लर्निंग में, स्पेसिंग का वगैरह वगैरह। सो ओवरऑल अगर मैं 5 प्रिंसिपल इफ यू जस्ट ब्रिंग अप फॉर अ सेकेंड। सी, आप खुद कंपेयर करो जिसका भी ये रेज्यूमे है, राइट? फॉर्मेटिंग, we've mentioned lot of work needed, right? Content, I think you have your base content, what you want to put, but there is no detailing of that content. It's very vague, and you need to build on that. Use ChatGPT, use whatever, right? Grammar, there are mistakes. We can see that. Typography mistakes हैं, इस पर बहुत काम करना है आपको. हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन में आपको ये बोलूंगा कि आपका जो स्ट्रक्चर, पहले ये जो 2 कॉलम का आपने इस्तेमाल किया, पहले वो उसको छोड़ दीजिए, फिर हायरार्की ऑटोमेटिकली एक सॉर्ट ऑफ फ्लो में आने शुरू हो जाएगी, राइट? अटेंडेड वर्कशॉप्स को आप मत को-करिकुलर मत करिए, आप वर्कशॉप्स करके एक सेक्शन बना लीजिए, राइट? बिकॉज दैट जस्ट कैरीज अ लॉट मोर, इट्स अ डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर, राइट? आपने वर्कशॉप किया, आपने को-करिकुलर ये होता है कि आप क्या बोलते हैं, डिबेटिंग क्लब में। हाँ, डिबेटिंग क्लब में और डांस किया है, म्यूजिक किया है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किया है, वो द को करिकुलर एक्टिविटीज में मतलब you should not talk about these things. These are a little more relevant to your job, so make them and convert them into workshops or something similar. That's okay. And I think a lot of other things, I think one of your course learnings, Python for data science, right? Where have you done it from? What is the capstone project you did while doing this course, right? Maybe you can put a link to the capstone project, which is very valuable, right? Learning Python for data science, maybe a lot of people are doing, but maybe you've done something really cool. Maybe possible your BBMS and your TMS that you've done projects on, you've used Python in the second one, right? And maybe you built some data modeling, data science modeling out of it, but that's not coming across. None of the technology side, nothing is coming across. So please do that. Please introduce that. Right. Also, my suggestion is, if your percentage is not very good, like if it's not like 80% and above, my recommendation is remove it. Yes. Okay. Do not keep it. Like if your percentage is at 69%, remove it. Right. And if you remove it one place, remove it everywhere else. You don't need it. If they really care about it, they will ask for it. Right.
And in that scenario, one additional recommendation, and we've touched upon this before, but very good point, कि अगर आप एक जगह से remove कर रहे हो, removing it from one place, you remove it from the others. In a scenario where you are removing your percentage or your CGPA or whatever it is, bring education to the bottom of the thing. Yes. Right? Because then there is no, that focus of top of the page then is not needed, because then you are not a super academic person, right? Then you are somebody like me who does a lot of projects, right? Who does a lot of work, portfolio kind of work and things like that, right? And showcase that. Correct. So yeah, I mean, identify your strengths. If it's education, put it on the top. If it is not the strength, put it at the bottom, and let your strength shine. It could be anything. And honestly, from a fresher, not much is expected. I just need one spike. मुझे एक spike चाहिए, मैं उसमें खुश हूँ. Absolutely. एक बढ़िया प्रोजेक्ट कर रखा है, खुश. एक अच्छा इंटर्नशिप कर रखा है, खुश. ठीक है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती है. सही. ठीक है, जैसे एक पिछले रेज्यूमे में था कि वो फर्स्ट रैंकर है, मैं उसी में खुश हूँ. फर्स्ट रैंकर है, चलो बात करने लायक तो है, बात करके देखते हैं. राइट? अब ये अलग बात है कि उसने कुछ और काम भी कर रखे हैं, लेकिन she has not done a good job at explaining his work. But this alone can at least get me, her or him to speak. Yeah. है ना? So that's the thing कि हर resume में मैं एक spike देखूँ, इसमें 2-3 spike दिख रहे हैं, तो I would like to speak to this person despite the fact that there are some other issues in this resume. इसमें मुझे spikes नहीं दिख रहे हैं. मतलब रेज्यूमे थोड़ा स्ट्रक्चर्ड दिखा, लेकिन जब थोड़ा सा भी घूर के देखा तो मुझे समझ में आ गया कि इसमें स्पाइक नहीं है, नहीं लूंगा मैं. राइट? इसमें थोड़े बहुत स्पाइक्स हैं, बट देन द रेस्ट ऑफ द स्टफ इज सो पुअरली पुट टुगेदर दैट आई डू नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम टॉकिंग टू दिस पर्सन. ठीक है? नोप, देयर इज नो स्पाइक, देयर इज नथिंग. इसमें नोप, नो स्पाइक. सो आउट ऑफ दिस 7 resumes, this person and this person has a chance of talking to us. Yeah. Rest, no. Okay, doesn't mean that you are bad. No, it means that your current representation of yourself is bad. You are not letting your work speak. So put in some work so that your work speaks. अपनी marketing खुद करनी पड़ती है. Please understand that. No matter when, ये कहानी 5 साल 10 साल बाद जब आप हमारी जगह पे होगे और हम ये सब बातें किसी और को बता रहोगे, सेम बातें बोल रहे होगे. Exact same. ठीक है? Exact same. So awesome. This brings us to an end to a 4-class series on resume review. Resume review तो बहाना था. मेन गोल था कि आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखा के आपको बताएं कि एक्चुअली रेज्यूमे कैसे इंप्रूव करते हैं. बहुत हमने सेशंस लिए हुए हैं और रेज्यूमे कैसे इंप्रूव करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं. आई एम श्योर आपने भी अपने अपने करियर्स, अपने अपने कॉलेजेस में, अपनी अपनी जगह में आपने अपने रेज्यूमे के बहुत सारे सेशंस अटेंड किए होंगे या फिर अपने वीडियोस देखे होंगे, कुछ देखा होगा. बट आई पर्सनली एम अ बिग बिलीवर इन प्रैक्टिकल डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग. तो इसी कारण मैं सोचा कि ये थोड़ा पेनफुल काम करते हैं, रेज्यूमेस लेकर आते हैं. थैंक्स टू दिस 7 people again, once again, for being open to criticism in a public forum like this. Thank you so much. You are actually helping out a lot of people and helping out yourself as well. Great. That itself is very good reflection of the kind of person you are. Great. My recommendation would be, as a summary of all the discussion that we just had, resume is just a representation of your work. You might be thinking, अरे मेरे को बुला लो, मैं बाकी बातें कर लूंगा. वो बुलाएगा नहीं जब तक आपका representation अच्छा नहीं होगा. ठीक है? So please put in some work. It doesn't take too long, and you just have to do it once for maybe year, 2 years. है ना? एक बार आपका फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, सब कुछ स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, उसके बाद बाकी अपग्रेड फॉर द नेक्स्ट 10-15 साल उसी में चलता रहता है. वो फॉर्मेट जो मैंने 15 साल पहले बनाया था, वो अभी भी फॉर्मेट वही है. ठीक है? बार बार बदलता नहीं है, अनलेस इट्स टेरिबली बैड. ठीक है? So with that, signing off.
hopefully I'll see you, work with you, all of you someday. I look forward. We both, I think I speak on behalf of Amar when I say this, we both find it to be very exciting, very, very encouraging to work with juniors. We work with freshers. So if you guys feel like working with us, do let us know. We'll be more than happy to work. Put it in the comments, any kind of other queries that we may not have covered, or anything that you found conflicting with the information that you already have. We would love to clarify it. We'd love to give you clear examples of that as well. Amar? Yeah, I mean, Talvinder summed it up pretty well, right? The reason that we are doing this is for that very sake, right? That people who have not gotten the option, visibility, chance to really go into these things, right? To get exposure. Like we spent 4 hours going through and reviewing resumes by itself, right? Talvinder has spent many hours spending and recording how to break into product management. I've spent a lot of time how something like ChatGPT we can use for so many different things in the product world. And many other such conversations we've had. There are fabulous founder recordings that we've done, how they found their way. What I want to say is that whether you're a fresher or someone who's got a little experience or wanting to figure out how to transition into product management or the larger world of how to build your career, find mentors, right? Find people who can help guide you. Now, doesn't mean you follow everything they do to the T. Ask your questions. Jo bolte hai, question the status quo, right? Do that, because then your mentors also learn with you. Correct. So that is the purpose of trying to create this ecosystem जो हम कर रहे हैं, कि interaction हम करें. अगर आपको कोई queries हैं, कोई confusions हैं, कोई कहीं block हो रहे हो, reach out, right? Talvinder and me, of course, and we spend a lot of time with students, like he said, right? I have people who used to live, say, in India and working 5 years. They shifted to the US and Europe, and they ping me on LinkedIn saying, "Yaar, मैं यहाँ पर कैसे करूँ?" क्योंकि the world of product is so different there, and the world of applications are so different there. Correct. So it is always a learning. So keep that hunger going is my only thing. Enjoy yourselves while being hungry, and yeah, that's what my thing is.